Before starting the welcome address, I would like to give my sincere thanks to Vice Chancellor, Mr. Narendra, respected Pro Vice Chancellor, Satyakam sir, Somakajila ma'am, and President, who have been instrumental in crafting today's event, and respected directors of the school, registrars of the divisions, and dear colleagues. I welcome you all to this event. Today, that is 13th March 2024, is a historical day. We are moving a step towards Viksit Bharat. Today, every Indian will feel proud because on this day, our Honorable Prime Minister Shri Narendra is going to inaugurate three semiconductor projects in Gujarat and Assam. We are going to start a transformative journey under the Indian Semiconductor Mission. India Semiconductor Mission is a specialized and independent business division within the Digital India Corporation that aims to build a vibrant semiconductor and display ecosystem to enable India's emergence as a global hub for electronic manufacturing and design. To celebrate this proud moment, this invited talk titled India Semiconductor Mission, a transformative journey for Viksit Bharat is organized by our university in Inauguration. Professor Abhinav Kranti, the Department of Electrical Engineering, IIT Indore, is our invited speaker and subject matter expert. Thank you, sir, for sparing time from your busy schedule. Professor Abhinav Kranti is a renowned researcher in the field of semiconductor. He has more than 25 years of experience in the field of semiconductor. Prior to his joining at IIT Indore, Professor Abhinav Kranti worked at University Catholic de Leuven, Belgium, Queen's University Belfast, UK, Tyndall National Institute, Ireland. He is working in IIT Indore since 2010. His research interests include DRAM, steep switching devices, cryogenics, quantum phenomena, material device circuits, and co-designs. Now I request our speaker, Professor Abhinav Kranti from IIT Indore, to deliver his talk on the topic India Semiconductor Mission, a transformative journey for the Viksit Bharat. Please, sir. Professor Kranti. Yeah, okay. Yeah, hello, am I audible now? Yes. Okay, thank you. Okay, a very good morning to all of you. I thank Professor Rao, the Vice Chancellor of IGNOU, and Professor Satyakam, Vice Chancellor, for giving me this opportunity to interact with you.
A very good morning to all the functionaries, dignitaries, faculty members, and students of IGNOU who have joined today to witness a very momentous day in our lives, which is the foundation laying stone by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of the semiconductor projects in the country. Now I'm going to share my screen, and I hope it will be visible to all of you. Host has disabled the screen sharing. Can you please check that? Yeah, is my screen visible to you? Can you confirm, please, if the audio and video are visible? Yes, sir. Yes, Okay, thank you very much. I'll start. I'm saving on the bandwidth by switching off my video. So today I'm going to talk about the Indian Semiconductor Mission, which is a transformative journey for Viksit Bharat. And I'm from IIT Indore. The outline of my talk will be that I'll first discuss the use of semiconductors in everyday life. I'll talk about the first invention of the transistor in 1947 and its advancement since then. I'll also talk about the semiconductor ecosystem, the Indian Semiconductor Mission, and some of the startups that have come about using semiconductors. And I'll share some of their products. And finally, the conclusion. Okay, so first thing is semiconductor in everyday life. Okay, that's very important. So my first question to all of you would be, how do you start your day? Okay, so I'll tell mine. I wake up with an alarm. I may not wake up with one alarm, but I have repeated alarms setting, and it takes many alarms, and I wake up in the morning. What do I do? May not be the best thing, but I first check my mobile phone and check the apps, and then probably wish good morning to all. This is usually our routine in the morning. And all the three activities that I have described above involve the use of semiconductors. Okay, this is very, very important. We'll take up each one of them as we proceed in this interaction. Apart from the morning routine, we use automobiles, we use payment cards, and we use diagnostic tools. These are some examples. There's several. Okay, but I've selected the few that we all use. We use vehicles to reach our offices or universities. We use payment cards. It's for the payment purposes, and there are diagnostic tools that we all use. Okay, whether it is in our homes, or in a laboratory in some facilities. Okay, so all of these use semiconductors, which is the backbone. Okay, and I'm going to show you a few examples which I found on the internet. Okay, so this is an automobile, and this is from Fuji Electric. The reference is given here below the image. That's an automobile, and it has engine controls, pressure sensors. The body consists of headlight controls, and you can clearly see MOSFETs are written. So they are specialized transistors, the backbone of the advancement in microelectronics and nanoelectronics.
Of course, there are many activities. If for the car, the interior light control, audio visual accessory controls, and there are the power trains, brake controls, steering controls, all these which we use in an automobile uses semiconductors. Okay, the critical critical component. Okay, so this is another image which is from SK Hynix, which is the memory, which is semiconductor memory. And semiconductor memory is very much part of our lives. Whether we talk about IoT devices, 5G network, I've discussed automotive industry, smart cities, digital fitness, smart TV. These are all, part of our lives. Mobile phones, servers, computing, everywhere the semiconductor memory is required. If we take out the semiconductor memory from all these applications, we'll be in serious trouble. Okay, so semiconductor is very much part of our lives. It's probably invisible in the sense that we see a product from the outside. But if we go deep down the product and try to decode it, we will see semiconductor memory or semiconductor chips, transistors behind, all these. Okay, so semiconductor is very much present in our daily lives. Okay, just a brief recap. What is a semiconductor? There are these conductors, which have high conductivity. They permit the flow of electricity. And then you have a different sort of a material, which is insulators, which do not allow the conduction of electricity. So as the name suggests, semiconductors somewhere lie in between. Few examples: silicon, germanium, gallium nitride. There are many more, but I'm giving only the few names here. So what is important here is to note that silicon has been the dominant semiconductor. It's abundantly available in the Earth's crust. And the semiconductor is really interesting because you can control the flow of current, and that is usually done by adding impurities in the semiconductor. So if you add impurities, you can enhance the flow of current through the semiconductor. And if you reduce the impurities, then you limit the flow of current. So it has very interesting properties. Now, if we try to correlate with digital technology, so the information is processed according to bits, which is binary numbers, binary digits, 0 and 1. So if we consider a semiconductor with impurity, it allows the current to flow through it, then we can consider that state of a semiconductor as bit 1. And if a semiconductor doesn't have impurities, it will not allow the current to flow to that extent. And this state can be considered as state 0 or low. Okay, so there is a clear analogy with the digital logic in the semiconductor in terms of the current flow that is possible through the use of impurities. Okay, so I've tried to have a very simplistic talk whereby I'll give examples of the advancement. So this part, I'll talk about the invention of the first transistor and what has happened since then. Okay, so here you see an image of the first transistor, 1947, the same year in which we got our independence. And this transistor was invented at Bell Labs, USA. It's a famous figure. And the three scientists, Brattain, Bradeen, and Shockley, got the Nobel Prize also. So this was remarkable
invention. And what it allowed was, it allowed for the amplification of signal and consumed less power. Previous to the invention of the transistor, vacuum tubes were being used, and vacuum tubes are not very interesting, in the sense that they are bulky and they consume a lot of powers. So a transistor was a major breakthrough. So with a transistor, you could design many things. So here I am showing a schematic diagram of a transistor. And there are semiconductors, the N and the P regions. That is basically a semiconductor, and then you have an oxide, and on the top of the oxide you have a gate, which is a metal. So what happens is, when you apply a voltage on the gate, a channel is formed between the two N plus regions. These two N plus regions are known as the source and drain. So in the figure on the left, you do not see this channel. So this is a state where the transistor is non-conducting. And in the figure on the right, you see a channel which is connecting the two N plus regions. N plus means it is an N-type semiconductor and it is heavily doped. The plus sign represents heavy doping. That is, the impurities, the concentration of impurities in that particular semiconductor is high. Okay, so we have two regions which are N-type, and the body of the semiconductor is p-type. So essentially what you can do is, you can have two conditions, again two states in this transistor. One state which is shown on the left, where the channel is not formed and the current is very low, and the right figure where the channel is formed and it is connecting the two N plus regions, that is state one. And in this state, the transistor allows the current flows, and that is state one. So you can clearly see that there is an analogy with digital logic, state zero, state one. Okay, so this is a basic schematic. Okay. So what is a semiconductor chip? A semiconductor chip is essentially an assembly of large number of transistors. Okay, and that is an integrated circuit. So you connect the transistors in such a way that you get a desired output. For example, you want to design an amplifier. So that will require an electrical circuit, a connection of transistors and other components. Okay, so what an integrated circuit does, it can store information and it can perform operations. So now you can see that using the transistor, we are able to have circuits which can store information and also perform operation. So in a certain way, the functionality is improving with the circuit using the transistor. Okay, this is a simple image to kind of highlight how this integrated circuit looks like. Okay, so basically it has billions of transistors. And if you would really like to compare how many transistors are there, I'll give you a simple number. The mobile phone that we use has more number of transistors than the stars in the sky. Okay, so that's the level of today's technology. And really we cannot see the transistors inside the mobile phone, so we take that for granted. But please understand that behind the phone that you use, really it's the semiconductors and transistors and their circuits. Okay, to give you in terms of number, NAND flash memory has 5.3 trillion transistors. Okay, so really, if somebody is really interested in numbers, so a small memory has trillions of transistors. Okay, and that's why you can see the sentence before this one, that mobile phone has
a large number of transistors, is really valid. You know, okay. So technology has advanced considerably, okay, since the invention of the transistor in 1947. Okay. So now let's talk about this advancement. And this advancement is essentially, governed by an empirical observation. Okay, Gordon Moore in 1965, he had some data, and on the basis of that data, he could foresee that the number of transistors in an integrated circuit doubles every 2 years. Okay, so he could understand that, and he made this projection. It's an empirical result based on the data available to him at that time. And this is the famous Moore's law. Okay, everybody says Moore's law, and since then the industry has decided to follow this empirical observation, and that's why this observation has achieved a status of law. So the semiconductor industry is trying its best to follow this law even now. And this figure on the right, it has many data points starting from 1970 and up till 2020. And the transistor count really increases. It's actually saturating now. The rate of increase is reducing as compared to previous decade. But nevertheless, this law or the empirical observation has been a guiding force for the semiconductor industry. Essentially, what it means is that the semiconductor industry has managed to reduce the size of the transistor and increase the number of transistors. Now, it's very important for an industry. Industry is there to make profit, and it's very important that this is happening at the cost, such that the cost per transistor is minimum. Okay, there is no point doubling the number of transistor if the cost doesn't go down. So the cost per transistor is minimum. At that level, this is being achieved, and this is probably the reason why the number of transistors is in trillions. Okay, what does it do? It helps us, and in terms of technology is faster. uh, all of you have used computers, personal computers. Personal computers, can process the data much faster as compared to, let's say, 20 years ago, 10 years ago, and cost is definitely reduced. Okay, essentially, you add more functionality to your chip when you reduce the size of the transistors, and you have more number of devices on a chip. Okay, so this is what the semiconductor industry has achieved since 1955. Now this evolution of MOSFET, this first diagram which I had shown to you. Okay, this one, the two diagrams at the bottom, this is essentially a MOSFET. Okay, M stands for metal, which is the gate. O stands for the oxide, and S stands for the semiconductor. So MOS, and the other part is FET. It's a field effect transistor. Okay, so this is a MOSFET. Now this has gone remarkable change to enable the increase in the number. Okay, so that is really technical stuff, but I'll try to explain this in a very, very simple way. So first, during the initial days, the technology was planar in the sense that the third dimension, which is inside the plane of this screen that you are viewing, its dimension was
quite high as compared to the other two dimensions. Okay, so that technology is referred to as the planar technology. And when you miniaturize the device, there are many effects which happen. Basically, it's related to the physics of the transistors, the electric field, and so there are certain effects which happen when we try to miniaturize these devices, and these effects degrade the performance of the transistor. Okay, so if the performance is degraded, there is no point scaling these transistors. There is no point doubling the number of these transistors. So what essentially we want perfect characteristics when we miniaturize the transistors. So, initially the semiconductor industry worked with planar topology, and then it realized that, it's not possible to miniaturize these devices with planar technology. Then it went into a three-dimensional structures. Okay, three-dimensional structures are shown on the right side, the two images A and B on the right side. Here, and these devices are basically, FinFETs. Okay, and even, we have more complicated structures, where the gate kind of surrounds the semiconductor region. So if you compare the first figure on the left, you see this gate, which is the dark colored region. It is at the top, on the top of the semiconductors. So the semiconductor industry has evolved to a certain extent that now it is able to have the gate all around the semiconductor. Okay. Now there are various benefits because of that, and I'm not going into those technical details. Okay, just to give you an idea, this is just the cross section, trying to understand, what has happened to the transistor architecture. So, if you look at the first figure on the left side, the top figure, which is single gate, this is it. You have one gate, and it's sitting on the top of the silicon region. Okay, and you probably look at the you know the bottom right figure, which is multi-bridge stack nanowire FET, where you see, certain windows on top of each other. Okay, so if you correlate, the dark colored region is the gate, and now you can see that you have gate all around the silicon film, which is light in color, and you are stacking the silicon films on top of each other and adjacent to each other. So technology has evolved remarkably, and we are able to have these advanced structures. It's not easy, when you have billions of transistors, to fabricate, these type of relatively complicated structures uh, in trillions, and then you make sure, that each transistor is identical to the other, because if they are not identical, the performance of the chip will drastically vary, and you don't want the chip to malfunction. Okay, so this is the evolution that has happened, and really it's because of this evolution that the products that we use are efficient, faster, and we can use digital technology in our daily lives. Okay, technical aspects I have not covered here. Okay, so how do you make these devices? So these devices, what we call as multi-bridge or stacked transistors, they require clean rooms. Now, clean rooms are specialized rooms with low concentration of particles. Okay, so this is an image here. In the clean room, we have to wear special clothes, and depending on what process is being fabricated, there are rules. Okay, so
these particles, that there has to be a certain number of particles in a certain space. Okay, and these are particles are classified according to number and the size of that is permitted per volume. Okay, so these are really, really specialized rooms where this fabrication is done. If you remember, sometime back, I said that there are trillions of transistors, and what the semiconductor industry wants is one transistor to be exactly same as the other one. Otherwise, there will be widespread variations, and the chip will malfunction. Precisely for that, they have specialized room, and they really don't want any impurities or particles in air to interfere with the process. Okay, so just to give you some numbers, ISO 3, which is a class 1000 clean rooms, has basically 1000 particles per meter cube with size greater than 0.1 micrometer. So really, size greater than 100 nanometers, there have to be only 1000 particles. Okay, so this is the level of sophistication which is needed in foundries where the manufacturing happens. And there are a clean room is a very big room, and not all portions of that room require this specification. Certain rooms really require very, very high specification, where you might have 10 particles per meter cube, and some might require you may be a bit relaxed and you may have more number of particles. So just imagine your house or a home flat, and there are several rooms. So one of them could be class 100, class 1000, class 10, something like that. And this is really, really expensive stuff, because all sophisticated instruments are kept here. And this is the proficiency of the industry is so high, because of which they have these transistors, and they are able to control how many particles are there in the room. Okay, so I'll talk about the semiconductor ecosystem to give you an idea what goes on in the background. So semiconductor ecosystem can be divided into basically it's chip making work. And so there is a design, someone has to design the chip, and then somebody has to manufacture it, and then somebody has to package what is manufactured, and it is the packaged product that we use inside our mobile phones. Okay, so there are various components: design, manufacturing, packaging. I have only mentioned packaging. It actually means packaging and testing. Okay, so that's very, very, very important. Okay, now there are players who are called as integrated device manufacturers. They deal with design, manufacturing, and as well as packaging. Okay, they deal with all these three. To give an example, Intel and Samsung are IDMs, integrated device manufacturers. And then there are fabless companies. So fabless companies deal with only design. To give you a few examples, Qualcomm, Nvidia, and AMD are common names. These are fabless companies. So what they essentially do is they get their design, and their innovation is in design, and then they outsource this design to a foundry which does the manufacturing and packaging. Okay, and then there is this foundry. So foundry, it deals with manufacturing, and TSMC is the world's largest foundry, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. So this is a big company which deals this. And there is outsourced assembly and testing. Okay, so this is basically the third part, packaging, as I said. So you have people who deal with this. And other than this, there are suppliers. Now, what are suppliers? Suppliers are group which supplies capital equipment to be used by foundry.
Okay. If you remember, you have seen that image here. There is lot of equipment here, and the two persons in this image are working. So, this is just a snapshot. There are complicated equipment for this manufacturing. So this is the entire ecosystem. Okay, we cannot do away with any of these three things: design, manufacturing, and packaging. And you have the suppliers. Okay, so I've tried to explain this concept by giving examples of few of the companies that work in these areas. Okay, so uh, as I said, there are certain integrated device manufacturers who deal with all the three, and there are some fabless companies who just do the design. Okay, so this is a very, very, very interesting comparison. It's fabless or foundry. What do you want to do? Okay, so this is something, it's the debate is going on for years, and different companies, different industries, they have their own strategies, and these strategies change with the market dynamics. So it's a difficult and a complicated question, but let's try to understand this. So setting up of a foundry can be really expensive, but it is of strategic importance. Expensive because to have clean rooms, to maintain clean rooms is not an easy task. Someone might be able to establish the foundry. That's good, excellent, but to maintain a clean room is even more expensive and difficult, because we have to control the flow of particles in the clean room. Okay, it's all about impurities in the air. Okay, so it's really difficult, expensive, and you always run the risk that the technology, it can be outdated. Okay, am I audible? Can somebody please confirm this? Yes, audible. Yeah, thank you very much. Okay, so but of strategic importance. Now let's think about it. During the pandemic, the supply chain was disturbed, and the supply chain was disturbed, and there were issues. Okay, and the chip that we have in our credit or debit card, even that chip could not be manufactured, and because of that, everything stopped. So it is of strategic importance. So this decision is not only based on the money or the investment, but of strategic value. If you want to send something to space, you don't want any problems there, and you want your own indigenous technology. You want to safeguard that technology. So there is strategic importance. You are developing a system for the defense of the country. Okay, you do not want any part of that entire system or the supply chain of that to be disturbed. So it is really strategic importance, and that is what I would like to emphasize. Okay, so now there have been companies which have shifted towards fabless, and fabless is only design, and it is more value for less investment. Okay, so that is important. And to give an example, NVIDIA versus Intel. Okay, so Intel is a very reputed company. NVIDIA is also a very reputed company. NVIDIA is fabless. Intel is an IDM, integrated device manufacturer. So the value proposition and the shares and all those things, of each of these companies can be very different. Okay. So the Indian government has decided to promote the development of foundries, packaging, and fabless units. And this is remarkable, and it's a far-reaching decision of the Indian government. And today, the Honorable Prime Minister Modi ji is going to lay the foundation stone. It will be a game changer for the country. Okay, as I said, to overcome the disruptions in supply chain and go for self-reliance.
Okay, and also it can promote small businesses who can make a big impact. Okay, so let me just talk about the semiconductor mission, and Honorable Prime Minister Shri Modi ji is going to lay the financial is going to lay the foundation stone, and the Indian government has invested a sizable amount for the semiconductor mission. Sure. This was notified in 2021, and so it has, the Indian government is doing everything it can to promote the semiconductor technology. It has given incentive to companies or consortia, that is a group of companies in various sectors. You know, silicon semiconductor fabs, display fabs, compound semiconductors, photonics, packaging, semiconductor design. So basically, the Indian government is trying to have all the three aspects of the ecosystem in place, and this is really a visionary um, uh, support which the Indian government is giving to the companies and to the academia and in industry. Okay, most importantly, it promotes self-reliance in critical sectors. Okay, so there are, you know, some images here, snapshots, you know, from IEEE Spectrum and Press Information Bureau, Government of India. So, you know, first fab, as I said, foundry, first fab, which the Honorable Prime Minister will lay the foundation stone, you know, that's going to be done today. So, you know, it's projected to generate 20,000 skilled jobs and 60,000 indirect jobs. And that's going to manufacture chips. And then there will be this packaging and test plant in Assam. The first one will be in Gujarat, and there will be another packaging and test plant in Gujarat. And there is also, you know, a chip plant in Sanand in Gujarat, where the another semiconductor company has started functioning. So, you know, the thing that I'm projecting is that, you know, all the three sectors of the semiconductor ecosystem are being supported by the government of India. Okay, so what now, you know, semiconductor mission is very good, but it also supports, you know, other missions of the country: National Quantum Mission, National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems, and obviously, if technology is going to be in India, Make in India, Digital India, and Atmanirbhar Bharat will all succeed. So it's a very crucial mission of the government of India. Okay, I just want to give an example when I say quantum mission. So, you know, Intel you know, is fabricating a quantum chip, and for the quantum chip they have used silicon CMOS technology. Okay, so the technology of the, you know, silicon CMOS, CMOS is complementary metal oxide semiconductor technology, serves as the backbone for their quantum chip. Okay, so essentially, you know, uh, the semiconductor mission is going to support other missions also. Okay, so the human resource development is a key point because, you know, India is home to around 200 semiconductor design and embedded software companies. Market is projected to grow rapidly, and there will be a requirement of 1.5 million skilled workers by 26-27. So a lot of effort has been going in this way through the National Skill Development Corporation, Skill India Mission, Sankalp, and capacity building of the Ministry of Electronics and Information Technology. Okay, this is a very important aspect. If we have to support the semiconductor mission of the country, then human resource development is a key point. And I feel that IGNOU should also take some lead in this. Okay, and the government is really trying to help, you know, by it
by bringing out this incentive scheme, all this is available at the website of the Ministry of Electronics and Information Technology. And they are really going all out for this incentive scheme, and this is for electronic system design and manufacturing. Okay. So I'm just coming to some of the startups. There have been some startups here who have done very well, and I'm just naming a few. There are many. I don't want to differentiate between them. I'm just for an example what has happened. And these these startups are mainly from IITs, and they are either based in Delhi, Madras, Bangalore, and they have done a really good work. So already Indian startups are there, and they are at the international level, and really doing very well, exceptionally well. Okay. So for example, this Agnet Semiconductor is based in Indian Institute of Science, Bangalore, and it was established in 2019, and it specializes in gallium nitride technology, and it's doing remarkably well. Okay. Similarly, there are other startups from IIT Madras. So the Indian startups are really are doing very well, and I think the semiconductor mission of the country will further support these startups and motivate many other startups to come and to contribute to the growth of the country. Okay, now I'm on the last three slides, and I want to give some examples. So some work which has been done. This is nano sniff technologies from IIT Bombay. I won't go into the technical details of this, but this is a product which is useful for homeland security, and as the name suggests, nano sniff. So it basically detects explosives, and this product is kept there, and through the chemical reactions and the associated electronic circuitry, it is able to detect particles of explosive materials. And really very good practical product that was developed by IIT Bombay group. And you for more details, you can go to their website. So these products are coming out in the market and are being used. Okay. So second product is from ISC Bangalore, Pathshodh Healthcare Limited, where you have these handheld products, and these handheld products, they are useful for measuring biomarkers for targeting diseases like diabetes, kidney disease, anemia, malnutrition, and liver. So these handheld products are also coming out and really helping the common man. And the last example of my presentation is something which is going on at Drishti CPS Foundation at IIT Indore, is the development of a human digital twin. So what happens is that there are these separate products. So in order to make a human digital twin, the data from these products has to be integrated. And here, a group is working on Charak, a digital twin, which is an aggregator for various digital healthcare solutions. And this is a big group with participations from AIMS, IITs, NITs, and from other universities. Okay, you can refer to the website and get more details. Okay, to conclude, the laying of the foundation stone of the semiconductor projects by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji marks an important step towards self-reliance and Viksit Bharat 2047. The Indian Semiconductor Mission is bold, timely, and critical initiative of the Government of India. And the Indian Semiconductor Mission will boost economy, create jobs, and benefit the common man
through the development of innovative products. Thank you very much. Please, sir. Now India is ready to take long lead to be the self-reliant in the critical fields. This whatever I got the theme of this lecture, and it was really a difficult task of any expert being a very in-depth research to deliver a lecture, an interesting lecture among so much diversified audience, and most of them not much know how like me about the expertise of this particular topic. But I express my gratitude actually complete this task and generated a lot of interest among us, which was the motive of this particular session. Now I also thanks to the EBCs and about that our everyone Vishwas, that was inspiration is always along with us that he sent or not to write any workshops. And I also express my gratitude, heartfelt gratitude to the peers and here, others audience, and some of them are very knowledgeable also in the same. This is the honest, I think we have for this question. So we now whatever whosoever which is directly or indirectly uh supporting this, I think this particular session, I also will express my gratitude all of them. Now we are ready for the sessions after any request to join the next session, which will be continued and definitely for bring the next trust in the next session speech to give a very good note. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. This was very nice from Professor Arvind, but one wide exposure right from the basics of the semiconductor that what it is and channel. And we are about for the India is going to start the things for the device miniaturization so that we can from the back part we are interested I think in design, development, manufacturing and also the pricing and the entire things are being going to address the interlinked areas likewise of the quantum computing and so I think this this good moment wherein we are the idea is going to go towards fixed Bharat and we are going to have more number of employments, more number of business opportunities, and this is saying that the wise man wins before the battle starts, and innocent fights to win. So this is the vision and mission of the leader. Thanks to our Narendra who have got the vision. Leaving the semiconductor device research authorities, India, C. Pilani was there, Chandigarh Semiconductor Complex was there, but we were not into the situation, develop, manufacture, and design the semiconductor thing out. So I think that आने वाले समय में because in order to achieve the trillion economy, it is better to reduce the expenses and start building up our own ventures, startups, so that we can go into the era of the smart cities. तो यहाँ पर खर्चे कम करने हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है इसके लिए हमारे लिए सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन होना बहुत जरूरी है. I think this talk will be very informative, and this event is really a proud moment. Thank you. Sure. In the next session from 10:30 to 11:30, we will be enjoying the foundation laying ceremony by our honorable Prime Minister, sir.
And thereafter, from 11:30 to 12:30, there will be a panel discussion wherein the experts from the semiconductor industry and semiconductor academics will be there to discuss the event, and we will be discussing different points as a panel discussion. Thank you. ये देखो किसी ने मैसेज किया और 5 मिनट का बायो ब्रेक और 5 मिनट के लिए चाय बड़ा कर और Yes. ठीक है आप नहीं सॉरी ठीक है लाइफ में तो डायरेक्ट जाना है डायरेक्ट Done. ये वाला ये चैनल एक ही लिंक मिला ना ठीक लिंक हमारा मैसेज दिया और डॉक्यूमेंट स्क्रीन है सामने उसे जुड़े मैं पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर क्या किसी देश का इन ऑफिस इनका वो राजेश को सुनते हुए ज्यादा पीछे ना राइट एक करोड़ का टारगेट है तुम्हारे घर नहीं ऑनलाइन मांगा गया फिजिकल 1 करोड़ होता है अब थ्योरी 5,000 को आप पे दिला दो एक चार्ट
सहर्ष आप सभी को सूचित करना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हार्दिक अभिनंदन महोदय। जैसा कि विदित है, आज का ये दिन भारत के विकास के प्रति एक अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और भारत के लिए एक उज्जवल समृद्ध भविष्य की यात्रा की ओर आरंभ प्रतीक है। इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता से विभूषित कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी का प्रतिबिंब है। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि आप कृपा करके स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। श्री अश्विनी वैष्णव जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात एवं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र एवं राज्य सरकारों में माननीय मंत्री महोदय, टाटा एवं सीजी पावर के अधिकारी, दोनों राज्यों के अधिकारी, ताइवान से जुड़े साथी और कॉलेजेस में जुड़े 30 लाख से अधिक यंग माइंड्स, एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब उसके भविष्य की नींव रखी जाती है, जब उसके सपने पूरे होते हैं और जब उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। आज राष्ट्र में ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले करने वाले और अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, 1962 से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। आज सक्सेस मिली है और ये सक्सेस केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्लियर विजन और डिसाइसिव लीडरशिप के कारण मिली है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। आने वाली कई जनरेशंस विकसित भारत के निर्माण में आज के दिन को याद करेंगी। आज एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन 4 को मिलाने से भारत में 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। चाहे घर में लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इन 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से एक प्लांट भारत के नॉर्थ ईस्ट असम में आज लग रहा है। कितनी खुशी का वो दिन होगा जब अमेरिका में, यूरोप में, जापान में मेड इन असम, मेड इन गुजरात और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप से बनने वाली कारें दौड़ेंगी, लैपटॉप बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, मोबाइल फोन चलेंगे। आज के इन तीनों प्लांट और माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में एक और खासियत है। डबल इंजन की सरकार में कैसे काम तेजी से होता है, ये चारों के चारों प्लांट इसका उदाहरण है। माइक्रोन के प्लांट का माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अमेरिका की स्टेट विजिट के दौरान जून 2023 में अप्रूवल किया।
90 दिन के अंदर अंदर गुजरात सरकार ने जमीन दी, सारी की सारी परमिशंस दी और फैक्ट्री का काम चालू हुआ। वैसे ही मोदी जी अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। टाटा और सीजी पावर के प्लांट 29 फरवरी 2024 में अप्रूव हुए और 15 दिन के अंदर अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन तीनों प्लांट्स का भूमि पूजन कर रहेंगे। ये विश्व में रिकॉर्ड है। ये संभव होता है तभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा डिसाइसिव लीडर एक देश में आते हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज हमारे साथ यंग और एनर्जेटिक 30 लाख से ज्यादा जो साथी वर्चुअली जुड़े हैं। आपसे मैं कहूंगा साथियों, नौजवान साथियों, आपके भविष्य का निर्माण करने वाली ये इंडस्ट्री है। आपके फ्यूचर को सेफ करने वाला ये फैसला है और ये फैसला केवल और केवल मोदी जी ले सकते हैं। इसलिए जब आप अपना निर्णय लें आने वाले कुछ दिनों में, तो याद रखना आपके भविष्य का ध्यान केवल और केवल मोदी जी रख सकते हैं। इस बात को आप अपने मन में रखना जब आने वाले कुछ दिनों में आप अपना देश का फैसला लेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका और सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। निसंदेह आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा होने वाला ये शिलान्यास आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। अब मैं चेयरमैन सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड श्री विलायन सुबैया से संबोधन का अनुरोध करती हूँ। श्री विलायन सुबैया। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Chief Ministers of Gujarat and Assam, Honorable Ministers Vaishnav ji and Chandrasekhar ji, colleagues, our partners and guests, Namaskaram. 75 years ago, my grandfather manufactured India's first bicycle. That was what the country needed at that time. Times have changed. Semiconductors are the new bicycle. These are the very basis of the modern manufacturing economy. They are critical to India's Atmanirbharta. Today is not just about laying the foundation stones of Tata's 2 plants and our plants, but the very foundation of India's emergence in the modern economy and an announcement of India's arrival on the global semiconductor stage. Why did we have to wait until now for this moment? What Bharat is now witnessing is as revolutionary as independence itself. We are seeing an awakening and a resurgence that India has never ever seen before. This government's ability to foresee what Bharat needs to be a world leader is absolutely unprecedented. Government and industry are collaborating effectively, leveraging each other. मैंने सोचा अगर चिप्स का है इंतजार तो सीजी है तैयार। Until now, Indians have helped other nations strengthen their leadership position in the world order. Brain drain. When I graduated from IIT, 140 students out of my class of 290 left for the US. This will no longer be the case. From now on, we will design for Bharat. We will make for Bharat. We will build Bharat. We are fortunate to have a very strong Japanese partner, Renesas. We asked Renesas who will be leading the initiative from their side. And they said Viresh Patel, who is here with us. मैंने बोला ये वीरेश पटेल तो जापानीज थोड़ा है। But this is the nature of the world today. Country or company, Indians are in leading roles. And that's something we ought to be proud of.
We are excited to set up this initiative in Gujarat. We come from Tamil Nadu. In Tamil Nadu, we have 79,000 temples. Gujarat has 50,000. It seems that both Tamils and Gujaratis are fond of going to temples. And that's basically because we all understand that there's something much bigger than ourselves. For me as well, yoga and meditation is important. In India, we understand that sadhana and bhakti actually help us become better leaders, help increase our intensity, our energy, our focus. So together, in the presence of Adi Yogi, we will create an intensely powerful semiconductor ecosystem that is built on the foundation of spirituality. I've written a few lines in lighter vein. हम सब हैं एक परिवार, हमारा डोसा आपकी चाट, देश का विकास सेमीकंडक्टर्स के साथ, तेज रफ्तार सीजी के हाथ. To rising India, जय हिंद, प्रणाम. Indeed, it's a historic day of silver line in the sky of growth and development of Bharat. और अब समय है चेयरमैन टाटा ग्रुप श्री नटराजन चंद्रशेखरन द्वारा संबोधन का. महोदय, आपसे विनती है कृपा करके अपने विचार प्रस्तुत करें. श्री नटराजन चंद्रशेखरन. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you for gracing us with your presence on this historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. Bahut dhanyawad. I am also privileged to welcome Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Chief Minister Shri Himanta Biswa Sarma ji, and Honorable Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji to this event. Dignitaries from Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, India Semiconductor Mission, governments of both Gujarat and Assam, distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of the media. I am thankful to all of you for your presence here in Dholera and Jagi Road, Assam, for the foundation stone laying ceremony of India's first semiconductor fab and the first indigenous semiconductor assembly and test facility. Today is indeed a very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera and Jagi Road, one in the east and another in the west, 2,500 kilometers apart. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. The ecosystem from across the globe will mobilize to have India as their preferred semiconductor destination. For our fab, we are very excited to partner with Taiwan's Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation. The executives from PSMC are joining this meeting today on video. They have given us access to a very broad portfolio of technology. Our partner is a leading foundry company with very extensive manufacturing experience in running mega fabs. The semiconductor industry is innovation driven. It is another foundational industry, like steel was for, steel is for physical infrastructure. Semiconductor is the foundational industry for everything digital. We look forward to closely partnering with industry, academic institutions, and every ecosystem player to build semiconductor talent and infrastructure of tomorrow
right here in India. We will be creating more than 50,000 jobs in this journey, and this is just the beginning. Today, every major economy is looking for self-sufficiency in semiconductor supply chain. There are three fundamental reasons for this. First, the chip shortages during the pandemic made us all realize the importance of electronics and our dependency on the global supply chain. Second, with the cyber warfare becoming a commonplace, self-sufficiency in semiconductors is a must and a matter of national security. And finally, domestic semiconductor manufacturing ecosystem is a must-have to galvanize the indigenous product ecosystem of tomorrow. In the spirit of the Tata Group and its core value of pioneering, we will deploy our deep customer insights and develop innovative solutions with agility, boldness, and courage. From the very beginning, we have been fortunate to pioneer several businesses, and today our journey of building semiconductor chips has begun. Semiconductor chips have a defining role to play in every industry. Like Minister Vaishnav said, automotive, communications, advanced computing, AI, green tech, industrials, medical devices, defense, consumer electronics, you take every industry, semiconductor chips are very foundational in nature. For the first time, India will have capabilities to serve semiconductor demands of both domestic and global customers with the chips built in our factories in India. I would like to thank you for your trust in the Tata Group as we embark upon this historic journey of India's decade, chips for Viksit Bharat. Finally, in the words of our founder Jamsetji Tata, the community is at the heart of everything that we do. We will build world-class social infrastructure and thriving communities both in Dholera and in Jagi Road in partnership with the Government of Gujarat and Government of Assam. Thank you again for this opportunity, and thank you, Prime Minister, for your leadership and vision and laying the foundation for a developed India. Thank you very much. धन्यवाद महोदय। वाकई में किसी महत्ता को समझना और फिर उस महत्ता को विकास से जोड़ना ही दूरदृष्टि है। पूरा भारतवर्ष देश के विकास एवं आत्मनिर्भरता को विभूषित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अपार स्नेह की धरोहर से अलंकृत कर रहा है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा शिलान्यास होने वाले सेमीकंडक्टर यूनिट्स में असम की ATMP यूनिट भी शामिल है। तो आइए जाने असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कितने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मेरा सविनय निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री असम श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी से कि आप इस शुभ घड़ी में अपने भाव व्यक्त करें। श्री हेमंता बिस्वा शर्मा। भारत की परम आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की श्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी, CG पावर के चेयरमैन श्री सुबाया जी, आज हमारे साथ कनेक्ट हुए सारे अतिथिगण, मैं आसाम वासियों का ओर से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, हम जब आसाम में GST का रिजोल्यूशन देश का सबसे पहले पारित किया था, मैं आज भी मेरा याद है आपने हम लोगों को बोला था कि A फॉर असम। आज यही आपका जो वाक्य था, इसको ही आज हमने साकार होते देख रहा हूं। असम को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेके
भारतवासियों का मन में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर था। लोग जब कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते थे देश में, लोग कभी उत्तर पूर्व को कंसीडर ही नहीं करते थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ करना संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका निरंतर उत्तर पूर्व का भ्रमण, आपका असम वासियों और उत्तर पूर्व के लिए आपका अगाध प्रेम का कारण आज भारत का सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन का पहला दिन ही असम को शामिल होने का सौभाग्य मिला है। असम वासी और उत्तर पूर्व आपको हमेशा याद करेगा, एक देश का जो एक नेग्लेक्टेड रीजन था, एक नेग्लेक्टेड रीजन को आपने टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का पहला शरण में लेके आया। ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव का बात है। मैं पूरा असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा मन में कोई भाषा नहीं है, मेरा खाली आज मैं इतना ही बोल सकता हूं। मैं असम में ही जन्म लिया हूं, कभी मैं सोचा भी नहीं कि असम विल बी द अमंग द वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन। ये काम आपका नेतृत्व में संभव हुआ। असम वासी आपको कभी नहीं भूलेगा। असम का इतिहास में और असम का आने वाला पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगा, आपका प्रेम का कारण, आपका महानता का कारण। और हमें भी, हम यही आपको आश्वासन देता हूं कि असम, जो आपने असम का ऊपर ट्रस्ट रिपोर्ट किया है, कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया है, उसका जो एक टेस्ट है, वो टेस्ट में हम खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अश्विनी वैष्णव जी ने हमें मार्गदर्शन किया, कैसे शुरू करना है, कहां से क्या लाना है, सारे हमें पूरा ये समय उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टाटा सन्स का साथ असम का बहुत बड़ा संबंध है। ये आज से ये संबंध नहीं है, ये बहुत दिन पहले से ही हमारा ये संबंध है। और टाटा ने ही ये हिम्मत किया ज्योग्राफिकल बैरियर को तोड़ने के लिए। मैं चंद्रशेखरन जी और तमाम टाटा ग्रुप को धन्यवाद देता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप एकदम बहुत बढ़िया असम में इकोसिस्टम मिलेगा। और आपको कभी, आपने जो ये सिद्धांत लिया, इसका कारण आप कभी रिग्रेट नहीं करेगा। आपको खुशी होगा, आपको अच्छा लगेगा कि यू हैव चूजन ए करेक्ट डेस्टिनेशन and choosing Northeast, you have contributed immensely for the development of this great region and great nation. प्रधानमंत्री जी, हमारा सामने लाखों लोग मौजूद हैं, सब आपको दोबारा अभिवादन करते हैं। और असम का इतिहास हमेशा एक आपको युग पुरुष का नाते आपको हमेशा याद करेगा। मेरा कोई भाषा नहीं है, मैं खाली आपको धन्यवाद देता हूं दिल से, असम वासियों का दिल से। भगवान आपको लंबी आयु दे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, आपका मार्गदर्शन में, आपका हाथ में ही भारत मां विश्व गुरु बने, यही मेरा कामना है, यही हम लोग का आशा है। और हमेशा आप ऐसे ही उत्तर पूर्व को आशीर्वाद देते रहे, असम को आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस शुभ बेला के उत्साह की तरंगे चहु और आभास की जा सकती है और पूरे देश को इस गौरव की अनुभूति देने हेतु एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना करबद्ध रूप में प्रणाम करना चाहूंगी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। विकास की इस अविरल बेला में गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैब विद 50,000 WSPM कैपेसिटी एवं सानंद में सेमीकंडक्टर APMP
यूनिट फॉर स्पेशलाइज्ड चिप्स का शिलान्यास अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। तो गुजरात की ये धरती इस आरंभवर्ती क्षण को किस प्रकार संजोए है, आइए जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के शब्दों में। माननीय, आपसे अनुरोध है कि कृपा करके उपस्थित गणों को संबोधित करें। श्री भूपेंद्र भाई पटेल। भारत के सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के भूमि पूजन समारोह में हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से उपस्थित वैश्विक नेता, विकास पुरुष, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आसाम के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे साथ मंच पर भी उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र भाई मुजपरा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखर जी, सीजी पावर के चेयरमैन श्री वेलिया सुबैया जी, सीईओ श्री डॉक्टर रणधीर ठाकुर, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी साथी मंत्रीगण, सभी धारा सभ्य श्री और वाला प्यारे स्टूडेंट, इंडिया टेकेड चीफ फॉर विकसित भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी गुजरात को भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशेष उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की विजनरी लीडरशिप में भारतीय उद्योग हर दिन नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत उनके प्रयासों से आज हम ऐसे कई कार्यों को संभव होते हुए देख रहे हैं जो कभी हम मुश्किल लगा करते थे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर भी उन्हीं सेक्टर में से एक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि समस्या और संभावनाओं में सिर्फ सोच का ही फर्क है और समस्या को संभावनाओं में बदलना ही मोदी जी की गारंटी है। भारत में टेक्नोलॉजी का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक ऐसे कई सेक्टर्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल हो गए हैं। इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मूल में सेमीकंडक्टर चिप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है और विश्व को रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात को भारत का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का जो विजन दिया है उसे साकार करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है। गुजरात के पास प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जमीन पर उतारने की अपार क्षमता है। सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गुजरात देश का पहला राज्य है जिसे डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी की खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अपने आप ही गुजरात में अप्रूवल मिल जाती है। धौलेरा में विकसित हो रहा सेमीकॉन सिटी भी भारत में एकमात्र डेस्टिनेशन है जहां सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी सभी जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। विश्व की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गुजरात की इन्हीं फैसिलिटीज के आकर्षित भी हो रहे हैं। माइक्रोन कंपनी के बाद गुजरात में सेमीकंडक्टर से जुड़े 2 प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। ये हम सभी के लिए गौरव के क्षण हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मिलने वाली
सभी निवेश अवसरों का लाभ लेने के लिए हमने एक नोडल एजेंसी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन को ऑपरेशनल किया है। आज धौलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और सानंद जीआईडीसी में सीजी पावर अपने यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, जनवरी 2024 में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में श्री एन चंद्रशेखर जी ने घोषणा की थी कि टाटा ग्रुप धौलेरा में एक विशाल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित करेगा और ठीक 2 महीने के बाद हम सभी इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। इतने ही कम समय में इस यूनिट की स्थापना का काम शुरू हो जाना, यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की उपलब्धि का जीता जागता उदाहरण है। इन दोनों यूनिट्स की स्थापना से लगभग 50,000 से अधिक रोजगारी के अवसर खुलेंगे। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होने वाले इस सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग न केवल भारत में मौजूद इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, ऑटोमेटिव, डिस्प्ले और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में होगा, बल्कि साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हम हिस्सा बनेंगे। ये यूनिट हमारे देश में चिप फैब्रिकेशन में अपनी क्षमता को विकसित करेंगे और भारत को विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई चेन में शामिल भी करेंगे। धौलेरा में उपलब्ध ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अहमदाबाद और धौलेरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे, रीजनल रेल और धौलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेमीकंडक्टर सेक्टर से पूरे इकोसिस्टम को जरूरी लॉजिस्टिक उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इनके इस विचार को वास्तविक रूप देने के दिशा में भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगा और गुजरात इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर स्टेट बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद महोदय। भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति देने हेतु अब समय है माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के कस्तूरी करों द्वारा तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज के शिलान्यास का। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप कृपा करके रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। धौलेरा गुजरात की टीईपीएल फैब फैसिलिटी का शिलान्यास भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है और अब हो रहा है मोरेगांव असम की टीईपीएल ओसेट फैसिलिटी का शिलान्यास। आरंभ के इस चंदन पर संपूर्ण राष्ट्र की शुभेच्छा। और अब सानंद गुजरात के सीजी पावर ओसेट फैसिलिटी के शिलान्यास के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इति शुभम। अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं पर बनी लघु चलचित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारत ये सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन।
जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है। अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के मोरी गांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृत काल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। वाकई आज के इस अभूतपूर्व शिलान्यास में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूरब और पश्चिम छोर को मिलाकर आज एक ऐसे भविष्य की नींव रखी है जिस पर विकसित भारत पल्लवित होगा। और इस उपवन के उद्यानपाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के स्वागत का जय घोष करते हुए मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से संबोधन के लिए अनुरोध करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन, सीजी पावर के चेयरमैन बेलायन सुभैया जी, केंद्र, राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धोलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए
ये महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए, एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का ये कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के छात्र इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बने। आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। मैं इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से शामिल प्रत्येक छात्र का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक पल भी गंवाना नहीं चाहते और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम इसका भी एक उदाहरण है। हमने 2 साल पहले
सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलियंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। भारत पहले ही एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए एफडीआई के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम्स को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री
कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही है, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। साथियों, आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो नतीजे भी मिलते हैं। भारत अब पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है। हम पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई दशक खो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पल भी गंवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, इस बारे में सोचा था। लेकिन इस सपने के बाद भी, इस सोच के बाद भी तब की सरकारें उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाई। इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ति की कमी, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए प्रयास की कमी
और देश के लिए दूरगामी फैसले लेने की क्षमता की कमी। इस वजह से वर्षों तक भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया। उन दशकों में जो लोग सरकार में रहे वो भी सोचते थे कि अरे जल्दी क्या है, समय आएगा तब हो जाएगा। सरकारों को लगता था कि ये तो भविष्य की जरूरत है, इसका समाधान अभी क्यों करना। वो लोग देश की प्रायोरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए, देश के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए। उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है, भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाईटेक चीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा
Actually, rather discuss बाहर की फोकस नहीं यार वही कौन सा क्या इसे प्रॉब्लम इट्स सर वो डिस्प्ले ट्रांसपोर्ट मैं वाला ऐसे को physically it's a review the internet if there were no people then Zoom पर भी जब अगर shift बात कर रहे तो मैं सर अगर वही नहीं है तो I don't know how Zoom कर सकते हैं you know it's not out there it's bad to keep out and this become the problem okay अच्छा बाबा ये सारे हैं बस एक चीज चलिए मैं आप लोगों को प्रदान करता हूँ क्लास चीज करेंगे ठीक है मैं दिल्ली से आया हूँ आप लोग फैकल्टी आप लोगों की स्टडी की है ना उसी समय जो नियम का आपसे विश्वास आपका जो एटीट्यूड है वो अपने कोड और अपने प्रति बहुत पॉजिटिव रखना कि यही चीज है जो आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े मैटर नहीं करता एक छोटे इंस्टीट्यूशन से लेके आप किस एटीट्यूड के साथ मार्केट में जा रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के साथ मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट दूंगा अपने फ्यूचर के लिए और शुभम सर से आगे कंटिन्यू करेंगे we are really interested to see. Welcome. First, this presentation, this is essentially in the form of panel discussion to understand what is the significance and importance of what has happened just now. Personally speaking, genesis of all this all started in COVID. And those of us, we have followed the international scenario during COVID. There is something called supply chain disruption. And the entire world essentially moves on this so-called chip. For us, globally, वो फाइल तक limited है, but आज की कोई छोटी जो बातचीत हो गई जिसमें आपको लगेगा कि इसके impact in all walks of life, it is there. And the supply chain disruption was essentially for that pandemic reason. But simultaneously, what was happening was there was some international flexing muscle, so to say, in a strategic term. Those are social sciences. They will appreciate that लेबल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि आपको अगर मुझे अगर आपका चेहरा पसंद नहीं है तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जिसके चलते आपका काम नहीं चलता तो मैंने उस नाराजगी में आपको कहा कि अब मैं नहीं देता. That is the label language of high sounding word of the strategic important industry and all that. So what actually happened is that
there was initially a real problem of moving things because manufacturing of finished product was happening at almost large number of locations worldwide. But the essential component for that manufacturing was being produced in this planet only in 5 countries, so to say: US, China, South Korea, Taiwan, and European Union taken together. So the COVID in somehow China was painted as a villain, and there was some market-oriented activist societies. They wanted to work on the logic of market. So there was some competition between China and US also. So all things got combined. So supply chain management disruption and the strategic importance, and countries wanted to dominate our world. Two different issues. That is a political issue, will not. So that is the impetus which has given when two countries has taken a major initiative. And when I was looking at doing quite data, I was very surprised at how Russia is not in this business of fab. Fab is something which is actually dealing with the manufacturing. And as Professor Kranti said, that it contains of complete chain, end-to-end solution contains of ecosystem. I will come to that also. So that was the most crucial component. Russia was not there, but Russia is there. It's a commodity. Important is that is materials. If you produce something, you need some material to produce the chip. So Russia was doing very nicely in the materials. It was a give and take. You cannot give with the chip, you will not get it. So it's a quick go. India was completely at the receiving end. The lowest level in the sense that we just had a screwdriver technology, sector used in industry, where you just get everything and you get a assemble everything and in that context, 10 years we have made a huge progress. India has become a very good manufacturing sector to the lowest level, which is called the screwdriver. As Professor Kranti said, and as the Prime Minister also hinted, that now India is taking a big leap towards having a complete ecosystem. Now, the ecosystem for semiconductors means starting from the intellectual capital, and saying it will now mean positive. There is a criticism also, which have a separate discussion on that. But the first thing it will impact is that it will stop brain drain. See, the US, US has shifted till the dirty part of the ecosystem to the developing country. The semiconductor industry is highly polluted. So they have shifted that to produce something as the दो चीजें आपको बता दूं जो आपके लिए सोचते रहेंगे अभी मैं सोचे लिमिट घूम जाएगा वन इज द मोस्फेट इन्होंने जो बताया कि देयर इज अ लिमिट कि आप कितने ट्रांजिस्टर्स एक छोटे से चीज पे बना सकते इसको आप ऐसे समझिए कि पुराने जमाने में गांव जो तो एक सिंगल स्टोरी के होते थे देयर वाज लॉट ऑफ लैंड जमीन आराम से बंगलों में तो वो भाई जमीन कम पड़ गई है लोग ज्यादा हो तो क्या करें then the idea of multi-story building came. The same land area, you can accommodate more people. This is what about each species. Sudhans will tell more. So that was one thing. So essentially designing the circuits of our chip plan, that was the monopoly of US. And that is why US is tracked with brains. हमारे आपके बच्चे पढ़ने के लिए लगे हुए That is the reason. They monopolize this, and on that they have no competition. They are far ahead than that now. Ecosystem there, and India has a huge youth and intellectual capital to work on that. Minister was very right when he was saying Intel, Apple, in all these things, the people who are designing their ICs, which has larger and larger capacity, substantial number of them are from India and a good number from Chinese also. So that is the first stage of ecosystem.
And the end product is what we are already doing. There's two term technology, the product is in the market. India has another advantage that we ourselves a huge consumer. Suppose you produce humanity, for example, Taiwan. Taiwan is a huge manufacturer of semiconductor chips. Huge. Coming India and China is that additional economy. Therefore, from and the move towards self-reliance was there in India since independence, right? But it did not keep pace with the evolving technology. Because we have a huge chain of CSIR land, we have huge chain of public sector manufacturing, we have from the day one when nuclear power was just an imagination, India has taken the leap along with the entire globe. But where we lack is the in between the period, right? Again, that's the politics. I will not go into it. So this is catching up. Now, age is something which is so much dependent upon semiconductor industry that unless you keep pace, you will be dependent. It will not count. The table of nations when you sit in the high table, your voice will not. US voice counts today. These are the reasons, not because USA is very good and USA is blah 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 and USA is the savior of democracy. That is all nonsense. In the hard economic, these are the reasons that with US, the world can't move. They have the strategic monopoly which can make the world stand still, or you can be left parking. That is one. Second is, there was I think I will stop and I will intervene. Anyway, let me now conclude. आप लोगों को थोड़ा थोड़ा टुडे देता हूँ. देखिए हम लोग घर खरीदते हैं तो बेडरूम साइज है 12 by 10. तो फीट का अंदाज आप सब लोगों पर एक फीट जब मैं कहूंगा तो यू हैव सम मेंटल इमेज कि एक फीट का क्या मतलब है. मैं कह दूंगा नैनोमीटर. मैंने कहा कि इधर से आने तो इधर से जाने तो बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा. नैनोमीटर इज दैट डायमेंशन ऑफ लेंथ व्हिच यू कांट जस्ट इमेजिन. मैं बता तो इसलिए फीट में समझा. फिर आप सोचिए क्या हो रहा है, वो क्या होगा इस एक फीट बाई एक फीट के स्लैब में आपको मैं एक पेन देता हूँ, तो बोलता हूँ कि इसमें 1 करोड़, करोड़ भी यूनिट अच्छा है, गुड़गांव जाइए सो करोड़ इज ए यूनिट, यू कैन अंडरस्टैंड यूनिट. मकान आज नकल सबको खरीदना है, सो फीट बता दिया फिर करोड़ बता दिया. तो आपको बोलूं कि 1 फीट बाई 1 फीट का एक स्लैब आपको देता हूँ. अभी से लेके आप जब तक सक्सेसफुल होते हैं इसमें 1 करोड़ डॉट्स आप दे दीजिए जो एक दूसरे को टच न कर रहा. कितना 1 करोड़. तो ये नंबर्स हमने छोटे करके बताया. ये टेक्नोलॉजी जो है आज से 20 साल पहले और आपको मूड स्लो समझा ही दिया है कि हर एक 4 साल में जो है इसकी संख्या पे जाते हैं. ठीक. तो 20 साल पहले आपको एक कोर्स दिया मैंने 1 feet के स्लैब पर 1 करोड़ इंडिपेंडेंट डॉट्स व्हिच आर नॉट टचिंग ईच अदर. ये आप कीजिए, ये आप नहीं कर सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल. यही काम यहाँ पर जो मशीन लगाया जाएगा. सो दैट्स फॉर टुडे इंटरेस्टिंग. सोचिए फिर बात तो इस पे बात करने के लिए आई हैव रिक्वेस्टेड वी हैव अ गुड पैनल from inside, from outside. नेचुरल हमारा हमने भाई एक ट्रांजिस्टर 1947 में बना दिया फिजिक्स वालों ने और इनके हवाले कर दिया. ठीक. And then the technology takes off. And then technology also does miracles. For example, the MOSFET, ये जो मल्टी लेयर की बात हो रही है, this was a technological innovation. And even this is a technology. आपने देखा होगा कि जब ये बात कर रहे थे कि डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग एंड सप्लाईज, हम भूल जाते हैं, चले जाते हैं आराम से एमआरआई करा लिया, सीटी स्कैन करा लिया और आपको इमेज आ गई. भाई मशीन बनाना इंटेलेक्चुअल चैलेंज. ऐसा मशीन सोचिए वो 1 फीट बाय 1 फीट पे 1 करोड़ डॉट देगा और 2 डॉट एक दूसरे से नहीं टच कर. That is done by machine, and some human mind is developing that machine that will give that kind of picture. Anyway, now
cutting short my introductory, which has become quite lengthy. Sorry for that. We have 5 speakers from industry, which is like very interesting because he's actually working in this area, the design of. And 4 from in-house faculty. We have Sudhan Sarma from SOCIS, all of us know him. Is the basic work that has developed PhD work in the hospital. So he will have some interesting facts to share with us. And I will again request all our leaders to keep things simple to level of understanding of layman and keep it to the minimum of technicalities. We start with Sudhans and then we join in line with Mr. Abhishek Bhatt. He is a man from industry and he has done his bachelor's from NIT and MTech from IIT Delhi. And then he's working in one of the multinational company which works specialized in the area of designing IC. And IC design organization like मैं यहाँ लेके बैठा हूँ सितारा और आप सभी दुनिया जिस किसी भी एरिया में आप दुनिया के काम कर रहे हैं आप अपनी समस्या लेके आइए मैं चालू करूंगा और एक निकाल के दे दूंगा दैट इज व्हाट आईसी डिजाइन मींस when you think of an area of your life and social life and they have a solution which will enhance your productivity. So mind you, in economic development nothing is going to survive unless your per capita productivity goes on increasing because it's a competitive market. If your product is costly nobody will buy it. So let us listen to Sheikh Lal. Then we have Dr. N. Venkateswaralu. He is our faculty from SOEP. He has done work and he is developing programs and courses on smart cities. So that is what is needed. As PM also said that our middle level towns and cities are doing that sanitation is one such initiative. Let us listen to him what more can be done in terms of smart cities. Then we'll listen from Sir V.V. Subramaniam, again from SOCIS. He is our local troubleshooter. Any problem you have related to IT, including the university, how to correlate and how to link together additional language. When you are COE, it's miraculous thing of integrating things. Then we have, we'll listen from Professor Diwakar. He has recently joined as professor in SOCIS. Before joining, he was at NIT Hamid, and he has vast experience of 24 years teaching at different institutions, and he has produced 10 PhDs, a substantial number of MTech dissertations, and 133 research publication credits. So we'll listen to him on AI already, because that is likely to be the book that what AI can do. And that's the panel. So may I request, without taking much time, to Dr. Sudhan's presentation to keep it short. You have already, I have already almost time, so keep it to, let's say, 5 minutes. Thank you, sir, for giving me the opportunity. And आप सब लोग are you comfortable with Hindi or should I continue only in English? Next I will be taking it. ये कलयुग है. हाँ, कलयुग means मशीनी युग, और मशीनें सेमीकंडक्टर चिप्स के बगैर नहीं चल सकती. तो चिप्स चाहे कोई भी चीज हो, चाहे पार्टी हो, चाहे सेलिब्रेशन हो, चाहे मशीन्स हो, चिप्स चाहिए. And thanks to our Prime Minister sir who inaugurated this part. It's honorable event, it's a proud event wherein हम सेमीकंडक्टर को स्टार्ट करने वाले. तो आप कहेंगे कि ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा कहां से इतना चिप्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसा हमारे पास क्या नहीं था जो हमने कर दिया. तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम are two important ingredients for the development of chips. So we are having silicon over insulator, we are having germanium over insulator. Likewise, Abhinav Kranti has told that we are having multiple configurations, gallium arsenide, indium phosphide. We are generating the semiconductor with that. But silicon इतना आएगा कहाँ से? हम जनरेट कहाँ से करेंगे इतना सिलिकॉन? क्या भारत में था पहले? अगर था तो कहाँ था? एंड ये जो प्लेसमेंट हुई है गुजरात में और असम में, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट है. स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट इन द सेंस जो रेत है, समुद्र की रेत है, सिलिकॉन ऑक्साइड है.
सिलिकॉन ऑक्साइड में जब हम मैग्नीशियम बेस्ड कंट्रोल्ड बर्निंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल्स हट जाते हैं और हमारे पास सिलिकॉन आ जाता है। अगर हमारे को, जब हमने 10th तक हमने साइंस पढ़ी है तो हमारे को पता होगा, हमने पीरियोडिक टेबल याद करी थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अपार्ट फ्रॉम दिस द फोर्थ ग्रुप एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। एंड हम उसके अंदर कुछ इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्ड ग्रुप इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं एंड फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे पास पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जनरेट होते हैं। Now, p-type semiconductors are positive and n-type semiconductors are negative. Now, p-type और n-type आप समझ सकते हैं कि घर में भी अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स हो गया तो शॉर्ट हो जाए। तो हमारे को ऐसा डिवाइस, अब अभी थोड़ी देर पहले होगा कि ट्रिलियंस ऑफ मॉसफेट्स आर बीइंग एम्बेडेड ऑन टू द सिलिकॉन चिप। नाउ क्या करा जाए कि हम छोटा करते जा रहे हैं पर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है, ऐसा क्या अंदर डिवाइस मॉडलिंग हो रही है? So different companies are working on it. There are different domains. There is a designing domain, there is a manufacturing domain, there is a packaging domain. Now जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, मैंने भी जैसे पीएचडी करी तो सेमीकंडक्टर्स में ही करी, पर हमारे पास इतने वेन्यूज ही नहीं थे। सिर्फ कंपनीज जो थी एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थी या एनालिटिक्स थी, एंड इनके अंदर डायरेक्ट लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही। सो वी डिड रिसर्च एंड वी कम टू एकेडमिक्स। अब ये सेमीकंडक्टर सेक्टर ओपन होने से हमारे पास इन हाउस जॉब्स बढ़ेंगे, हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। हम जहां पर जो इंडिया के अंदर मेजर काम होता है वो दो तरीके के एक्चुअली डिजाइनिंग के अंदर काम होता है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के अंदर जो काम होता है वो ग्रीन्स फंक्शन पे काम करते हैं, एंड जो हमारा थाईलैंड, चाइना, बैंकॉक ये वाली जो बेल्ट है इसके अंदर हम पॉइजन इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं। दीज आर टू मैथमेटिकल टूल्स टू डिजाइन। अब आज के डेट में बैचलर ऑफ डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स चल रहा है। Now, डिजाइनिंग डजंट मीन कि मैं इंटीरियर डिजाइन कर रहा हूं। मुझे सेमीकंडक्टर चिप को जो फैब्रिकेट करना है तो मुझे किस तरीके का डिजाइन एम्बेड करना है कि मोर एंड मोर ट्रांजिस्टर्स कैन बी एम्बेडेड ऑनटू ए सिलिकॉन चिप। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि ये मेरा एक सेमीकंडक्टर चिप है, एक ब्लॉक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब एक डिजाइन ये हो सकता है कि मैं इसके ऊपर एक मेटल चिप लगा दूं, जैसे अभिनव जी बता रहे थे कि गेट है, उसके बाद इंसुलेटर है, उसके बाद सेमीकंडक्टर है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ना। अगर मैंने एक लगा दिया तो मेरे पास सिर्फ एक ही मॉसफेट हुआ। अब दूसरा डिजाइन हो सकता है कि मैं एक मेटल नीचे लगा दूं, एक मेटल ऊपर लगा दूं, तो इसका मतलब है मैं उसी फ्रेमवर्क के अंदर दो मॉसफेट्स ला सकता। अब अगर मैं सारी तरफ मैं मेटल लगा दूंगा तो इसका मतलब है नाउ वी कैन हैव मल्टीपल मॉसफेट्स। सो देयर आर डिफरेंट डिजाइन, सिलिकॉन सिंगल गेट, डबल गेट, मल्टीपल गेट्स, cylindrical gates, because of which we are able to embed more and more MOSFETs into the single silicon chip. Now MOSFETs का फायदा क्या है? हमारे आज की डेट में हम बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, एज कंप्यूटिंग की, फॉग कंप्यूटिंग की और मिस्ट कंप्यूटिंग की। हम हाई स्पीड इंटरनेट की बात कर रहे हैं, बट इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी कैसे, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगी कैसे? क्योंकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर, ज्यादा से ज्यादा मॉसफेट्स पर यूनिट एरिया चाहिए, तो डिवाइस मिनिचराइजेशन होना जरूरी है। अगर सोर्स और ड्रेन अगर पास पास आ गए तो चैनल शॉर्ट हो जाएगा। तो यहीं पर डिवाइस मॉडलिंग की काम आता है कि हम चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन कैसे करेंगे, शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वेरियस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम डोपिंग लेवल कितना कंट्रोल करेंगे, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आर द डिवाइसेस विच आर कंट्रोलेबल। कंडक्टर्स हमेशा ऑन रहेंगे, इंसुलेटर हमेशा ऑफ रहेंगे, पर हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए जो हम जब चाहे ऑन हो जाए और जब चाहे ऑफ। That means we need to set a threshold level wherein if we set the voltage level up to a particular limit, it is 1, otherwise it is 0. Now, because of this 1 and 0 part, we are able to embed these MOSFETs into the field of computer science, because computer science is also a discrete science which is having the requirement for 1 and 0. Not only MOSFETs, we are having diodes, we are having transistors. Diodes are in fact valves which allow the flow of current. So, and transistors are those who are from the field of digital electronics might know that there is a cutoff region, there is saturation region, and within cutoff and saturation region, analog devices are working, and at cutoff region and saturation region, the digital devices are supposed to work. So, in order to work at the digital level, we are supposed to work with MOSFETs, wherein we are going to give the threshold voltage. At the threshold, above the threshold voltage of device, the channel is going to communicate in between the source and drain, and below the threshold voltage, it is not going to communicate. तो हम मेमोरीज के ऊपर कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? मेमोरी का मतलब क्या है? हम उसे याद कर पा रहे हैं, और जीरो मतलब हम भूल जा रहे हैं।
तो इसका मतलब है हम अब उसे चार्ज को अगर स्टोर कर रहे पा रहे हैं, हमारा मॉसफेट कंडक्ट कर पा रहा है, तो हम उस चार्ज को रिटेन कर पा रहे हैं, हम मेमोरी के अंदर डेटा को सिक्योर कर पा रहे हैं। हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, हमने थ्रेशोल्ड लेवल से कम कर दिया, चार्ज गया, खत्म हो गया, दैट मीन्स इट इज लॉस्ट। सो these high speed internet, high speed processors, high speed memories, all are possible with the help of only these MOSFETs. Now thing is कि यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि डिवाइस मॉडलिंग के अंदर काम आते हैं, जो कि हम लोग डिजाइन लेवल पर वर्कआउट करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड डोपिंग लेवल कितना होना चाहिए, हमारा डिवाइस का साइज कितना होना चाहिए कि इससे नीचे हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और उस चीज को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। एंड यही कुछ थोड़ा सा मैं आपके लिए 5-10 मिनट में प्रस्तुत कर पाया। एंड आई थिंक द मोर डिटेल्स विल बी शेयर्ड बाय आवर नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर अभिषेक। वेलकम सर। Hi everybody, can you hear me? Hello everybody, can you hear me? Yes, you're audible. Okay, great. I'm really delighted to be here. And before I speak, maybe I can share my screen. It will be easier. थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ों को समझाना और बताना. May I share my screen? Yes, go ahead. Okay, thank you. Let me know, please, if you are able to see my screen. Yes, it's visible. You can see the slides? Yes. Yes. Okay, great. Okay, so of course it's a moment of extreme pride for all of us. Actually, समझना मुश्किल है. Maybe people जो बच्चे हैं and the new generation, they may not be able to visualize it. लेकिन this is a very big dream which has come true today. जब से हम लोगों ने semiconductor में enter किया है, जब से हमने इसकी पढ़ाई की है, we have always been thinking कि India में semiconductor fab क्यों नहीं है और कब आएगी. So it's a big pride moment for all of us, and I have to really thank Honorable VC Sir, Professor Nageshwar Rao, Pro VC Professor Satyakam, Professor Uma Ma'am, and Professor Sandeep Rawat for arranging the session, because it helps me to express my happiness and share some thoughts with all of you. Just to say that the couple of sentences spoken by Honorable Prime Minister, यही समय है and सही समय है, I think it is a very apt statement. So that is in the direction of what we are saying is the chips to Viksit Bharat. So when we say Viksit, हमें normally economic development के बारे में आता है बात. थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो it becomes social upliftment also. And a very, very important thing about development of a country is national security. तो जैसा कि डॉक्टर सुधांश ने बोला, बहुत ही एप्ट बात बोली कि कोविड के टाइम पे सिचुएशन शुरू हुई, ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, ऐसा एक सिनेरियो बन गया कि सम वेरी पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैव द मोनोपोली ऑन दिस साइड एंड दे आर नॉट इन सो गुड रिलेशन विद इंडिया, दे कुड they could flex their muscle, वो अपनी ज्यादा ताकत दिखा सकते हैं, and we were dependent. So it was very important for us also from a national security point of view to develop this capacity कि आज हम VLSI की इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर्स में, हम अभी तक सिर्फ डिजाइन करते हुए आए हैं. हमारा सारा जितने भी आपको मालूम ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोफेशनल्स हैं, I think more than 70-75% are coming from India, right? सभी जितने भी बड़े नाम आप सोच सकते हैं, एप्पल, इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, एनवीडिया, जो भी हम आज के गैजेट्स में लगे हुए हैं कंपनीज, चिप्स, वो सारी इंडिया में ही बन रही हैं फ्रॉम अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन फिर भी हम डिपेंडेंट हैं क्योंकि हम जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते थे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के स्टेप से वो वैल्यू चेन कंप्लीट हो गई है, हम डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग भी कैपेसिटी अब डेवलप कर पाएंगे थैंक्स टू दिस वंडरफुल इनिशिएटिव एंड step which has happened. But why is semiconductor so important?
इम्पोर्टेंट, आई थिंक अगेन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कम है, बट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि एक टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया एंड उसने पूरा वर्ल्ड चेंज कर दिया। एंड दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो प्राइम फंडामेंटल ब्लॉक था दैट वाज स्टील, राइट? And steel became the pillar through which the industrial revolution took place and all the mechanization took place and everything changed. कुछ इकोनॉमीज डेवलप हो गई और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वो अंडर डेवलप्ड रह गई या डेवलपिंग में कहते हैं उसको। अब पिछले 10-15 साल से हम कह सकते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुका है। आज की डेट में एनीथिंग दैट वी डू, हम तो कहीं भी जाते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन कि अरे यार ये इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे जाना क्यों पड़ रहा है, आप मुझे मैसेज कर दो, आप मुझे ऐप में बता दो, ये पेमेंट मैं ऑनलाइन क्यों नहीं कर सकता, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैमरे से क्यों नहीं दिख सकती, मुझे क्यों आना जाना है। एवरीथिंग इज कंप्लीटली डिजिटलाइज्ड। एंड अगेन अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से एनालॉजी बनाएं तो डिजिटल रिवोल्यूशन का जो फंडामेंटल पिलर है वो सेमीकंडक्टर है। तो अगर हम आगे के 20 साल 30 साल 40 साल सोचें, हम बात करते हैं, हम जो भी इमेजिन कर सकते हैं, जो भी मूवीज में आता है, मार्वल की मूवीज में कि पॉड्स होंगे, ट्रैवल फास्ट होगा, टेलीपोर्टिंग होगी, कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में हम जाना चाहेंगे वो हमें डिजिटल रेवोल्यूशन ही लेके जाएगा और वो हमें सेमीकंडक्टर्स ही लेके जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ डेवलपमेंट विकसित भारत पॉइंट ऑफ व्यू कि सेमीकंडक्टर्स में हमारा अपना पूरा होल्ड हो। दैट इज द प्राइम थिंग। Just to give some idea, sorry to confirm, voice is clear? Hello, voice is clear? Coming Yeah, clear? it's clear. Okay, great. Clear. Yes. अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि what is the value in terms of billion rupees in Indian billion rupees, जितना हम import कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। So it's 6,207 billion rupees, right, in the last year. That is the level of import we are doing on electronics parts. तो ये सारा इंपोर्ट हमारा ट्रेड बैलेंस को अफेक्ट करता है, हमारी डेवलपमेंट को इम्पीड करता है। एक टाइम है, आई मीन दैट पेट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड सो हैज नाउ बिकम द इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर की उतनी ही वैल्यू है जितनी कभी पेट्रोल की होती थी। आज पेट्रोल की भी है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर्स भी वहीं पहुंच चुका है। तो इंडिया डज नॉट हैव पेट्रोल बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के पास नहीं है पेट्रोल के, बट as Dr. Sudhan said, we have abundance of silicon dioxide, right, in the form of sand. We are very well geographically placed to have that resource. तो एटलीस्ट हम उसको अब मोबिलाइज करके यूटिलाइज करेंगे तो we will be able to convert these electronic imports not just to reduce but even change them into exports. That is what is the impact of today's step. जस्ट छोटे से एग्जाम्पल्स हैं, किसी भी एरिया में आप चले जाइए कि सेमीकंडक्टर का क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्या एप्लीकेशन है। सिंपल सी बात है, आज की डेट में अभी भी इंडिया प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है। हम ऑब्वियसली सर्विसेज एंड कंप्यूटर्स ये सब तो है लेकिन एग्रीकल्चर इज स्टिल फंडामेंटली देयर। और एग्रीकल्चर में आज की डेट में कितना ज्यादा इंटरवेंशन है डिजिटल का। मतलब सबसे पहली चीज आपको मौसम का जानकारी सैटेलाइट्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू सर्वेज, राइट, लैंड का सर्वे, वेदर फोरकास्ट, फिर आपके सॉइल की मॉनिटरिंग हो गई, आपको इरिगेशन करना है, पानी कब देना है, कब छोड़ना है, ऑल दिस हैज बीन डिजिटलाइज्ड। सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि जो फार्मर है या जो भी वर्क कर रहा है उस पर्टिकुलर फार्मिंग पे, he can monitor कि ओ अचानक से वेदर फोरकास्ट चेंज हो गया, वी कैन चेंज सम थिंग्स, मैं इरिगेशन मुझे बंद कर देना है, पानी बंद कर देना है। या इवन आजकल तो ये भी हो गया है कि अगर कहीं इंसेक्ट्स के कुछ ज्यादा मूवमेंट दिखी अचानक से तो आपने कुछ इंसेक्ट्स के ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया वहीं से बैठे बैठे। तो दिस इज वेरी स्मॉल एग्जांपल और वो सारी इंफॉर्मेशन उसके फोन पे आ रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो टीवी पे भी देख सकता है। दिस इज द लेवल ऑफ application of semiconductors in a small, not small, a very very big but a very basic thing like agriculture. थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, अगर हम ह्यूमन बॉडी को देख लें, आप आज की डेट में इट्स सो कॉमन, मेरा मुझे वॉक करना है, मुझे इतने स्टेप्स करने हैं, मेरे वॉच पे सारा इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। अगर कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट है, मुझे इतनी वो लेना है, मेडिसिन लेनी है, टाइम टू टाइम लेना है। अब
अब ऐसा हो गया कि ठीक है, द गैजेट्स विल बी ऑलरेडी टेलिंग यू कि अब आपके मेडिसिन का टाइम हो गया है और कितनी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन रिलीज करनी है, वो सारा उसमें है। दीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अपने छोटी छोटी चीजों में, शूज विल टेल यू कि ओके आप किस स्पीड पे भाग रहे हैं, किस प्रेशर पॉइंट आपका, कौन से पैर में कौन सा प्रेशर पॉइंट ज्यादा पड़ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन वो कैप्चर करके उस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ इंटेलिजेंट सिस्टम बता सकता है कि ओके यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग ज्यादा चाहिए, इस साइड पे क्वेश्चनिंग ज्यादा चाहिए, so you can have a better health life, quality life, and that will make you more efficient. अगर ध्यान, दिस इज अ चार्ट विच शोज कि कितना ज्यादा, जस्ट अगर वेरिएबल सेंसर मार्केट देखें, मतलब सिर्फ ह्यूमन बॉडी पे कितनी सेंसर की एप्लीकेशन है, तो दैट विद इन द नेक्स्ट 5 years 10 years, I mean, it is going to go from 661 million USD to 5,200 with a growth of 30%. तो अगर इस एरिया में इंडिया ये जो छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, अब इंडिया इस समय बना नहीं सकता है, ज्यादातर इंपोर्ट करता है। अब आप सोचिए कि इंडिया जब बनाने लगेगा थ्रू दीज फैब्स, सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट्स भी इंडिया के पास होंगे, तो वो उसे असेंबल भी कर पाएगा, सारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हाउ मच विल बी द एडवांटेज टू द इंडियन इकोनॉमी, और उससे जो जॉब्स जनरेट होंगी, दैट एनीबडी कैन इमेजिन। इवन आज की डेट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि जस्ट बाय द सेटिंग अप ऑफ द फैब 15,000 to 25,000 jobs are going to get created very, very soon. So in the next 5 years, that market is going to go very, very high. कार्स में हम बैठते हैं आज की डेट में, हमें म्यूजिक चाहिए, हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, फोन को कनेक्टेड चाहिए ब्लूटूथ से, हमें इंटरनेट से अपना वो भी देखना है कि अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, या कोई क्रिकेट मैच देखना है। अगर चाबी खो गई है तो हम ये भी चाहेंगे कि ओके चाबी हम ब्लॉक कर दें। इवन वी आर एबल टू ट्रैक, अगर बाय द वे गाड़ी कहीं चली गई है तो वी शुड बी एबल टू ट्रैक इट्स लोकेशन। तो कार्स में भी हमारा जो फंडामेंटल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी हमें इतनी एप्लीकेशन है सेमीकंडक्टर्स की। ऑल दिस इज बेसिकली, इसका जो पीछे जो फंडामेंटल पॉइंट है वो सेमीकंडक्टर्स का एप्लीकेशन ही है। एंड देन फॉर ऑल दी पीपल एंड इसके पीछे ये तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, लेकिन इसको एनेबल कौन करेगा? इसको एनेबल तो हम आप जैसे इंजीनियर्स करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी हैं, जो डेवलप करेंगे स्टूडेंट्स को। एंड every discipline has application, electrical, electronics, computers, data analytics, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन मैकेनिकल का भी बहुत रोल है, सेंसर्स, प्रेशर पॉइंट्स, राइट, कितना स्ट्रेस है, बहुत सारे रोबोटिक्स में सारा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है। communications, chemical engineering is going to become a big thing. अगर fabrication lab आ रहा है, we need this quantity of water, as Dr. Sudan said, ये doping है, ये concentration है, this is all chemical engineering, right? तो वो बिल्कुल that will become one of the prominent streams. Biotechnology, medical, health side पे, material science, so all kinds of disciplines will be enabled and propelled by this step. इवन वेस्ट मैनेजमेंट, राइट, आज की डेट में वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। और उस वेस्ट मैनेजमेंट की अगर आपको नॉलेज है और आपने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो इट कैन बी अ वेरी बिग थिंग। हमने देखा है ट्रेन्स में आज की डेट में देयर इज सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द बायो टॉयलेट्स एंड ऑल दैट। उसी चीज को थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी वाइज देयर कैन बी सम इंटीग्रेशन विद द इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो। So from a workforce point of view, एक छोटा सा example, I don't have data from an Indian industry point of view, but there is already a lot of data on the global gap which is there in the semiconductor ecosystem with respect to the designers. तो एक छोटा सा मुझे data मिला, this is only for Europe, but it is just giving you a reflection कि अगले 9 साल में the workforce gap from 2 lakh is going to be requiring is 6 lakh, right? So ये सारा gap भी Indian ecosystem जो अब develop हो रहा है, it is also not going to serve just Indian needs. It is also going to serve the needs of the global, world. And just I'll end this with a small estimate. You see, this is I mean, there was a talk initially कि कितने छोटे area में आप कितना चीज fit कर सकते हो. You gave the example of a house, and then you have to make flats on it. This is a small number, right? एक 180 नैनोमीटर की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें 221 मिलियन डिवाइसेस आते हैं ऑन अ चिप ऑफ 420 मिलीमीटर स्क्वायर। एंड अगर उसी टेक्नोलॉजी, ये 10 साल पहले की टेक्नोलॉजी, आज की डेट में 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है, मतलब वो और थिन हो गया और छोटी हो गई टेक्नोलॉजी, और उसमें 12 बिलियन डिवाइसेस हैं 200 मिलीमीटर स्क्वायर। सो यू कैन इमेजिन कि एक छोटी सी चीज में आपके 12 मिलियन डिवाइसेस हैं।
एंड वो डिवाइसेस ही तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको कैलकुलेटर भी हो जाए, उसी में 4 कैमरा भी आ जाए, उसी फोन में मुझे ये वाला फीचर भी चाहिए, वो वाला फीचर भी चाहिए, स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए. ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज नंबर ऑफ डिवाइसेस. So this is all going to be be made enabled by this circle which I have shown here, which is a wafer, right? Wafer, that is the silicon wafer. जो silicon wafer आज की डेट में अब इंडिया भी बनाएगा और ये जितने भी डिवाइसेस हैं इसको इसमें डालने की कैपेसिटी डेवलप करेगा. So big day for us, and and the future has to be through all the students and all the engineers that faculty is going to develop. Thank you. Since the Venkateswara, there was smart cities. Yes. Thank you. I'm Prosi Venkateshwari from School of Engineering and Technology. I think. You have to be. My area is with the application of semiconductors in smart city. So semiconductor, just now we have learned about the semiconductors, how it works. Actually, the semiconductor is in the smart city, how it indicates. So the semiconductor means it is IoT devices. In IoT devices, the semiconductor is works like a heart of the IoT device. Semiconductor is part of the IoT device. When IoT is work like a nervous system in the smart city. So there are various functions in smart cities. First of all, we have to understand about the smart city. The smart city encompasses 6 important sectors that need to work in unison to achieve a common goal of making a city more livable, sustainable, and efficient for residents. These sectors are smart energy, smart integration, smart public services, smart mobility, smart buildings, and smart water and smart health system. These are the why we are calling it as a smart. So the IoT devices embedded with the semiconductor. It provides the data and whatever the function we want. So smartly we can do that function. These semiconductor devices will be utilized in the smart city. So we can see that the smart cities comprises of IoT devices, e-health devices, and it is connected with the various remote sensing units and cellular towers. So that then only we call it as a smart city. The smart city. So suppose, for example, why we are calling it as a smart city, and if any incident occurred in the smart city, to reach that place, the cities we are having more number of traffic is there. So for that, if it is connected throughout the road is built with the infrastructure of this sensor system like CCTV cameras and even command and control center. So that information once any incident occurs someplace and that information is collected by the CCTV cameras and sensor system and it will send it to the command and control center and that command and control center will analyze with this collecting the data. So if it is the fire department, if it is the police department, it will send it to that department. Then immediately the department will reach that place. But by reach, how to reach? Because of traffic, it cannot reach. If all this infrastructure is provided through the roadways, so that the even connected vehicles, the connected vehicles also coming up with all these embedded systems. Just now, but then Vishek has shown that car is having various embedded systems, so that the data will be collected, so that every car will get the information. Please give the way for the ambulance or traffic police, so that to control that incident, whatever the incident happens. So that is the importance of these semiconductors in the smartphone. And at the core of the smart city is an interconnected network collecting and sharing data. This network must not only work non-stop, it simultaneously has to fulfill high requirements of the connectivity, bandwidth, and processing power while being able to work at very low power. For this reason, the key technology for IoT device essential to smart cities is semiconductor technology. The semiconductor technology is used for chips and hardware components inside the smart objects, especially smart sensors, monitoring technology. The processors in an IoT device such as MCU or microcontrollers have to be embedded with software
to sense the data, process it, and communicate with the network. Due to the network mostly being connected to the internet, a large part of the developing IoT system consists of individual devices with high performance connectivity options such as 5G, LTE, Wi-Fi, and Bluetooth technology. And there are various services are there in the smart city that are planning, traffic control, parking, creation and distribution of power, energy usage, maintenance of public areas, water and waste management, and public safety. So there are all these services has to be provided in the service mix in the smart city. So for that smartly, how to provide these services in smartly, so that there the semiconductor comes in the form of Internet of. Then suppose a parking, say a smart parking. The smart parking lots with the radar sensors can spot vacancies and direct incoming vehicles to open space, even reserving spaces by network per car before they arrive to the lawn. So the information will be sent to the person when he is entering to the parking place. So there, that place is there, so he has to park there. It is an electric vehicle. So what happens? So electric vehicle, if you the plug-in, the charging places are also available. If it is electric vehicle, it will be shown separate place so that from there you can plug in to charge his battery. So like that, these are the smart ways we can provide the services in the smart cities. Then infrastructure maintenance. For example, in the infrastructure maintenance, the smart cities everywhere have to maintain fixed number of public structures such as bridges, road surfaces, buildings, electronic sensors that monitor vibrations and report wirelessly to the city network can help maintenance engineers predict stress failures and arrange for the timely repairs. So, for example, the harbour buildings in Australia monitored with around 5,000 sensors established on it to find the strength of the bridge with the varying loads continuously. Because in that bridge, every day, 360 vehicles will move from that. The smart transportation, the semiconductor enable IoT applications in smart transportation, such as vehicle-to-vehicle communication and autonomous driving system. These systems rely on sensors and processors to collect and analyze data from vehicle surrounding and enabling features like collision avoidance and adaptive. Then in the waste management also, IoT devices use IoT enabled trash bins equipped with semiconductor-based sensors can monitor waste levels in real time. This data allows waste management authorities to optimize collection routes and reduce operational costs and improve the overall efficiency. This I conclude here. Thank you very much. I'm so sorry, all the speakers have to cut short their time. Although allocated time was also not very much. But the remaining two speakers, Professor Subramanian and now along with the speakers, communicating some quality in between something there. Otherwise, okay, let's again linger. I'm happy. Let's sit up to 1:30, no issue. Let's sitting in today development. Yes, you come. Very just. Currently, I have time. Yeah. In fact, activity of world quality is not that. It's not another now. No, I think it's the presentation they need. next week, I think discussion. Someone wants to put in perspective. That's all. वैसा करते हैं presentation brief कर लेते हैं and then so right I don't know sit I think you note that. Yes, good afternoon, everyone. Taking the cue from the predecessors, I'll just highlight some of the points which are like my discussion is around interdisciplinary contributions to semiconductor advancements. Not only the CS, computer science engineers, or the IT people will be having a good footing in the semiconductor industry. However, there are various disciplines which can contribute. The various disciplines
which from the university, suppose UG, PG students, whoever are coming from the universities, they may be having equivalent footing on the in the job circle of the semiconductor industry. So I'll just focus on some of the jobs wherein which the other discipline students also can take in this particular industry. So here, computer science people, they are having a very great advantage when we talk about the semiconductor industry. Not only computer science, electronics, the electronics engineering people and the electrical engineering people. These people will be having a great job opportunities when we talk about the semiconductor industry. So semiconductor is the micro heart for any equipment, any electronic equipment. So that is the micro heart which will be totally controlled. And we have to remember 2 C's and 2 S. 1 C is for computing, connectivity, and 1 S is for sensing, storage. So these are the 4 things that we have to remember, and all these 4 things can be done with the use of the semiconductors. So it is not one single chip that we are manufacturing, but it will be having several chips of wide variety, which may be used in cars. So for example, in a normal car, you will find 1,000 chips, 1,000 chips. And if it is a hybrid or a EV car, electronic car, you will find 3,000 chips. So this is the huge volume that we are using with knowingly or unknowingly. And nowadays, when the car is about to break down half an hour before, you will get a signal, red color light, engine failure. That you can find it in your tachometer also. So those are the chips that those are the chips that continuously monitoring the health of the car and their display. Not only fuel injection, it may be a door sensor, it may be a fuel injection sensor, it may be speed sensors. A lot many sensors are almost close. And a single mobile phone, normal smart mobile phone consists of 14 sensors. So minimum 14 sensors are the things. So until now, we are just importing the chips from countries like Taiwan, China, Singapore, Hong Kong, Vietnam, Thailand. So these are the main contributors when we come. And here, what we are doing is, one way we are designing the chip and we are exporting our expertise to those companies. Our people are totally into the design side and our brains are used, but we are unable to manufacture. So today, with this particular initiative, we are like the Honorable Prime Minister has activated 3 initiatives wherein which we will involve in design, manufacturing, packaging, and testing. So all the 3 DMPs. Till now we are only held with the D, and we are held with the assembly by importing all the chips. Now it will be total coverage with DMP and testing also. So huge number of opportunities. Still now only designers. Designers once again only computer science engineers, IT engineers, electronic engineers, other electrical engineers are the people who are taking the advantage of designing side. But now as it is completing the whole life cycle, so ample number of opportunities will be there for each and every discipline. So starting with the computer science, as you know, design is one aspect, firmware, that is like designing the software, writing the programs for the chip, that is called as firmware. As we talk, hardware is the hard units, software is the programs, and firmware is the program residing inside the chip. So that particular firmware is one of the area where in which people are placed. And then device drivers. Whenever we input, automatically a device driver pickup. Suppose if you insert a pen drive to start, if it is new to that system, obviously a device driver come up and it will occur. So likewise for each and every chip, the device to work, a driver is necessary. That is, a software is necessary in order to activate the component inside the system. So these are the opportunities for the CFC people. And EDA tools, once the design is ready, once the production is ready, the EDA tools, that is called as electronic design automation. So the whole thing is lying upon the automation of the whole industry. So automation, once the design is final, if you could give it as the input, the whole design tools, that is the one area wherein which people will be getting the job. Simulation software, test automation. For the electrical people, I told there are several number of job opportunities, especially for the materials aspect.
While we are talking about the material, silica is the basic material, germanium is the third, second material. Likewise, there are certain known materials for the semiconductor industry. So material science engineering people will be getting very good opportunities. Mechanical engineering will be getting the very good opportunities in fabrication facilities or automation, or as microcontrollers, machine controls, all these things will be done using the, once again, by the mechanical engineering people. Chemical engineering people, they'll be getting the semiconductor fabrication like doping, etching, and then deposition. So all these things are, so again, as we are moving into the manufacturing unit, all these things plays the major role. And then physics and applied physics. So this is once again a very good area where in which R&D, whatever that is happening with respect to the semiconductor industry, that too from the physics background, most of the people will be employed in the semiconductor industry. Apart from that, optimizing the device performance, developing the new fabrication techniques. So once again, Robert sir said, कि one by one में कितना आप ये how gradually you improve. So that comes under the optimization part. Once again, the optimization of the nanotechnology. Once again, nanotechnology, there are many MTech courses in various IITs. So brain drain हो रहा है. That is what I mean to say. We are like doing jobs for other countries. However, nanotechnology is very much useful in the semiconductor industry, very much like primary chemical. So जितना nanotechnology, nano items बनाने के लिए कोशिश करेंगे उतना इंजीनियर्स भी चाहिए. हमारे पास तो IITs में people है, they are not useful for us, but they are very useful for US, UK, or else other South Asian countries. So business and management, once again, once the product is designed, you want to have the marketing part, you want to have the planning, strategic planning, and then publicity part, and then project management. The whole things will be once again the domain of the school of like a management perspective. So आपको वहाँ पे MBA और इस तरह का लोगों का जरूरत पड़ेगा. Environmental science, once the whatever the waste like electronic waste is the hazard. So electronic waste को कैसे आप इसको properly इसको ये करेंगे. Once again, that is a good area where in which people will be getting the jobs. How eco-friendly will be working. Likewise, UI and UX, user interface and then user experience. So whatever the devices that we are using, कितना user interaction और कितना आसानी से आप इस device को use कर रहे हैं, वहाँ पे user interface और user interactive का user design engineers को जरूरत पड़ेगा. बैचलर ऑफ डिजाइन वाले का एक जरूरत पड़ेगा जैसे कि डिजाइन साइड पे. एंड देन टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एंड देन लीगल एक्टिविटीज. इसके लिए आपका तो स्टूडेंट्स का जरूरत पड़ेगा. एंड देन लाइकवाइज आपका स्मार्ट एप्लीकेशंस के लिए और इसके लिए तो ऑब्वियसली कुछ कोर्सेस है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेस, 1 or 2 कोर्सेस पढ़ने के बाद कुछ लोग ऐसा है कि normal BA BCom students be automatically they can read, they can go through those 1 or 2 courses and then they can be at some sort of application development or at least testing वगैरह करने के लिए भी उनका ये मिलेगा. So thanks for giving me the opportunity to share the Yeah, thank you, sir. First of all, I would like to thank Professor Sandikant and Professor Makanilal Madam for providing me an opportunity to be part of this panel. As my topic is basically the impact of artificial intelligence in semiconductor industry. So AI, if when we talk about AI, तो AI क्या बना है? AI कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आज आ गई. AI तो 1950s में आ चुकी थी, तो आज इसकी बात क्यों हो रही है? तो इसका आंसर होगा कि हमारे पास डेटा की अवेलेबिलिटी. नाउडेज हमारे पास इतने सारा डेटा रोज जनरेट हो रहा है, हर व्यक्ति इतना ज्यादा डेटा जनरेट कर रहा है. जब 1992 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था बाय टिम बर्नर्स-ली, तो उसने ये नहीं सोचा होगा कि इतनी सारे डेटा जनरेट होंगे जो पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे. तो जैसे हम लोग अगर देखें अपने आप को, तो हम लोग ईमेल कब इस्तेमाल करना शुरू किया? मे बी लेट 90s में हमने ईमेल शुरू किया
और आज हम सोशल मीडिया पे ज्यादातर मे बी फ्यू आवर्स वी इन्वेस्ट ऑन सोशल मीडिया। हम क्या कर रहे हैं? वी आर जनरेटिंग डेटा। तो हम जब डेटा की बात करते हैं तो डेटा की यूनिट की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसकी वो बिट्स। बिट्स मीन्स जीरो और या तो ऑन अदर, जो ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो बिट्स के बाद क्या है? बाइट। बाइट से क्या है? किलोबाइट। किलोबाइट के बाद क्या है? मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद क्या है? गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद क्या है? टेराबाइट। टेराबाइट के बाद क्या है? पेटाबाइट। पेटाबाइट तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद भी हम एक्साबाइट, that is 10 to power 18, 10 to power 18 exabyte, then gigabyte, and nowadays we are talking about geobyte. Geobyte size is 10 to power 30. तो हम ज्यादा समय नहीं रह गया है कि हम हो सकता है जियोबाइट्स में डेटा जनरेट कर। Who will handle? Who will handle those data? Can any expert, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, कोई फील्ड का एक्सपर्ट है, उसके बस की बात नहीं है कि वो इतना डेटा को हैंडल कर सके, वो इतना एनालिसिस कर सके। तो जब इतना डेटा एक्सप्लोजन हुआ, देन इट कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। AI is basically what? AI is technology that comprises machine learning, comprises natural language processing, comprises deep learning. So initially, when the data was less, so machine learning was enough. But now machine learning, in which many things were required to be done by manually, like कि जैसे हमें फेस रिकॉग्निशन करना है, तो फेस रिकॉग्निशन में वेदर इट इज ह्यूमन फेस और वेदर इट इज एनिमल फेस, एनिमल में कौन सा एनिमल का फेस है, तो हम क्या करते हैं? ये ह्यूमन फेस है तो हम कहेंगे कि उसकी दो आंखें होंगी, उसके नाक होंगे, उसका मुंह होगा, उसके दो कान होंगे, और ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बेस पे हम करते हैं। ये फीचर हम एल्गोरिथम के द्वारा बताते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है और छाई भी है उस डेटा की, कि हमारे पास वेराइटीज ऑफ डेटा। जब वेराइटीज ऑफ डेटा हमारे पास है, हम उस पर बेटर ट्रेनिंग कर सकते हैं, बेटर ट्रेनिंग कर सकते हैं और हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है। सो कॉन्सेप्ट केम्स ऑफ डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग में क्या है कि, और डीप लर्निंग पॉसिबल क्या हुआ वो हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे। डीप लर्निंग में हम क्या करते हैं कि अगर हम डीप लर्निंग पॉसिबल हुआ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो हमें कुछ कोई कोई नेचुरल इंटेलिजेंस होगा, कोई कोई बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस होगा, न्यूरॉन्स होंगे, जिसके बेस पे कॉन्सेप्ट ये आया। तो हम जब बायोलॉजिकल न्यूरॉन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन की फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन में हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन में कितना इतना न्यूरॉन्स है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन, दे आर कनेक्टेड, दे आर नॉट आइसोलेटेड। तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, अगर न्यूरॉन की बात करें तो उसमें सेल होता है, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सन्स होता है और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, सिग्नल पास होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरी में। तो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। और जब मैं इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस या ह्यूमन ब्रेन में इंटेलिजेंस कहां से आता है, कैसे होता है? जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो क्या उसके पास न्यूरॉन्स की कमी होती है उसके ब्रेन में? नहीं, उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं इस चाइल्ड के जितना हमारे पास, लेकिन वो उसकी न्यूरॉन ट्रेनिंग नहीं हुई है, लर्निंग नहीं हुई है। तो बच्चा जब बड़ा होता है ग्रेजुअली क्या करता है? लर्न करता है दो तीन तरीके से। एक तो वो अपने पीयर से लर्न करता है, पीयर्स में भी फ्रेंड, पीयर्स में भी पेरेंट्स, पीयर्स में भी टीचर, और एक खुद करके सीखता है, खुद करके सीखता है। तो जो हम पेरेंट्स के द्वारा या किसी के गाइडेंस में सीखता है उसी को कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। जो खुद से सीखता है उसको कहते हैं अनसुपरवाइज। और कई कई बार होता है कि इस दोनों से हटके रीइंफोर्स लर्निंग भी होती है। रीइंफोर्स लर्निंग मतलब कोई बता दे भाई आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, उसके बेस पर वो इंप्रूवमेंट करके करता है। तो ये ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारा एफिशिएंसी घटती जाती, घट जाती। क्यों घट जाती? क्यों हम भूलने लगते हैं? क्यों हमारी क्षमता उतनी नहीं रह जाती? क्योंकि वो
डीके होता है डेटा, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरल में ये चीज नहीं। आर्टिफिशियल न्यूरल वंस इट इज डेवलप्ड इट विल बी ऑलवेज देयर। तो डीप लर्निंग की बात हम कर रहे थे, डीप लर्निंग में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स मतलब क्या है, व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इज ए टाइनी प्रोसेसर, एक छोटा सा प्रोसेसर है इंडिविजुअल न्यूरॉन। तो जब डीप लर्निंग करते हैं तो कहते हैं कि उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स बढ़ा देने से क्या कॉम्प्लेक्सिटी उत्पन्न होती है? द कंप्यूटेशन, द मेमोरी प्रॉब्लम, द स्टोरेज, नेटवर्किंग। तो इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सेमीकंडक्टर्स का यूज। सेमीकंडक्टर अकेले, सेमीकंडक्टर भी बहुत पुराना है और ये बहुत सारे अप्लायंसेस में हर जगह यूज होता रहा है, लेकिन अब कहते हैं कि एआई यूज होगी सेमीकंडक्टर में। व्हाट डज इट मीन? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। सेमीकंडक्टर एज earlier speakers told that it's Moore's law. What is Moore's law? कि every 2 years में कंप्यूटेशन पावर डबल हो रही है, डबल हो रही है। तो शुरू से दिस थ्योरम हैज बीन अप्लाइड। आज तक अगर हम देखें तो कई गुना कंप्यूटेशन पावर बढ़ रही है और जो सेमीकंडक्टर चिप है उस पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में स्मॉल यूनिट्स में, नैनो यूनिट में हमारे ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी कंप्यूटेशन पावर को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर दिए। तो कंप्यूटेशन पावर को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने से अफेक्ट ये हुआ कि एआई एप्लीकेशंस जो है, जो कि बहुत कम कंप्यूटेशन मांगती है, जो बहुत कैलकुलेशंस करती है, बहुत सारा डेटा होता है, तो वो सारे करना पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमें एआई एप्लीकेशन में 4 चीजों की जरूरत होती है। एक कंप्यूटेशन पावर की जरूरत होती है, दूसरा मेमोरी की जरूरत होती है, तीसरा स्टोर करने की क्षमता की जरूरत होती है, चौथा नेटवर्क बैंडविड्थ की जरूरत होती है। तो ये 4 चीजें हमारी पॉसिबल हुई थ्रू द यूज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर चिप्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक दूसरे का ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी तक हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, चाहे हम वो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग वगैरह की बात कर रहे थे। तो ये सुविधा कहाँ पे थी? यूएस में थी, ताइवान में थी, वियतनाम में थी। तो हम लोगों को अपने प्राइम मिनिस्टर जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सारी चीजें हमारे खुद के कंट्री में शुरुआत हो रही है। इससे ना कि केवल हमारे बच्चों को जॉब्स मिलेगी, इससे हमारी इकोनॉमी भी बहुत डेवलप होगी, इससे हमारे विकसित भारत बनने में इसकी हेल्प मिलेगी। दैट इज ऑल आई वांट टू से। Now we have to take a call. Time already I am overshooted. Let me thank the panelists and then the house is open. First of all, Sudhan started with the sequence of things are very interesting. अच्छा हुआ सुधार ने शुरू किया, हमें वहाँ जहाँ से शुरू करते ये पूरा इसका initiate. Then we the restaurant. He said that how it can have. It's an and then we say a lot. I was expecting some more technical detail. So give the detailed and import of what has happened today as a direct conversation. And then Professor Subramaniam, he said that what other disciplines can look for, which is development. And we ended with a very interesting and disruptive technological input from Professor Yadav. And I have a lot more to share on that. But then I think already it's late. Let's sit some other time to talk it further. But few questions are welcome before. Sir, may I request some details you discussed about the expertise regarding design of this with the US, and a lot of Indian engineers or scientists are there involved, or you are still involved with it. So what was the restriction that monopoly with US was there because of some international law or some expertise with even our people were participating in that particular designing, but they were not contributing us. And now what is the status? The same field, whether we are
our people are in the field of designing, or we are hiring them back? Because China has done in the last few years, they are calling back their scientists for some technology, some critical area. So what is the status now? Because of patent laws or whatsoever, because of that, we will getting the designing, the price becoming. People just want. Personally think others can, when they are from industry, say it was the right person. But I personally think that it's not like that. See, when I was looking at his company, say, NXP Semiconductor, if you go to the head of any multinational company, it's very difficult. You will have to work hard to find who owns these companies. They are like people. They will never divulge where the ownership and the control of the company resides. Therefore, what Abhishek was also saying, in bank, there is large design company. But the major control in those companies resides either in US or in China. China is also worked very hard to set up their own end-to-end solution. In regarding India, India has a poor culture. No intelligent person will like work in India, especially if someone is exposed to US work culture. Whole day is completely but such a hopeless condition will practice remain. In the moment they come up for their 20 offices, should them pitch. वो अपने घर में हो सकता है 2 घंटे ट्रैफिक पर आप एटलीस्ट में रहना नहीं चाहते तो ना also they patent पेटेंट है जिस चीज का वो तो आपको देना पड़ेगा थिंग्स ओवर सो एआर पे कम और इन्होंने जब बताया मॉस्फेट तो फिजिक्स में एक आइडिया दे दिया है which technology is struggling. फिजिक्स ने ये कहा है कि आप ये 0-1 में उलझे हुए हैं आप कंस्ट्रेंट फील कर रहे हैं मिनिएचराइजेशन हैज रीच्ड इट्स साइंटिफिक नेचुरल लिमिट all of them are इससे छोटा नहीं हो सकता stuff it comes and it has come in terms of quantum computing. Quantum computing एक popular word है but the idea is brilliant. Idea ये है कि between 0 and 1 there can be n number of possibilities. So in that space only you can multiply your computing power many folds. तो ये तो आइडिया आपने दे दिया और हम तो आराम से बैठ गए वी आर वर्किंग ऑन सम अदर आइडिया बट टेक्नोलॉजिकली इट्स अ ग्रेट चैलेंज तो आज आप कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग का कोई एक टेक्नोलॉजी कर लें अपनी पेटेंट लेके आप बैठ जाए तो एक हिस्टोरिकल डिगेस है जो यूएस के है आई एग्री विद दैट थिंग्स आर ऑलवेज वेरी फास्ट ये 0.1 हैज रीच्ड इट्स लिमिट टेक्नोलॉजी कितनी भी इंप्रूव करे साइंस ने क्वांटम फिजिक्स ने लिमिट सेट की है कि आप इससे छोटा नहीं हो सकते इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर तो वैसे में इंटरवेंशन विल कम फ्रॉम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एज द एआई इज एआई हैज कम एंड इट हैज चेंज्ड एवरीथिंग और only complicated questions raised किए हैं एआई so I think patent is right if others can elaborate on this Yes, sir. Yeah, Abhishek can if he is still online. और भी कुछ लोग पूछना चाहे तो एक बार सवाल Hi, can you hear? Is there? Hello. Yes, Abhishek. Right. I'm very fond. Yeah, we made Abhishek, unmute yourself. Okay, is it better now? It's just okay. Okay. So I would say कि there was no restriction. ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्यों कोई restriction पहले हो जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए. I think the most important thing is कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड है राइट ओवर द इयर्स पहले इंडिया बीइंग डेवलपिंग इकोनॉमी इंडिया ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स को लिमिट किया एंड उस टाइम जो भी इंडिया के यूनिवर्सिटी से जो कैपेबल लोग थे दे फाउंड कि
यूएस में ज़्यादा रिसर्च हो रही है, एंड दैट इज़ वाई इन द पीरियड बिटवीन 1970 टू 1990 ज़्यादातर जो इंडियन टैलेंट था वो यूएस जाके अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर पाया, क्योंकि इंडिया में रिसर्च पे फोकस उतना नहीं था। फिर जब 91 के बाद इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन अप करी, एंड देन दे इंडिया के इंजीनियर्स दे गॉट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, एंड धीरे धीरे सिंस लास्ट 20 years इंडिया हैज गॉट सो मच एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज कि अब इंडिया का रिसर्च इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया है, इंडिया का एक्सपोजर भी बढ़ गया है। तो द सेम पीपल इन इंडिया who were going US, now they are ready to work in India for Indian companies and towards Indian products. एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा कि यूएस और चाइना की जहां तक बात है, ओवर द ईयर्स इतने सालों में धीरे धीरे अब ये ग्लोबल वर्ल्ड में ये बात समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं एक रिलायबल पार्टनर चाहिए होता है सिस्टम में। तो इंडिया की जो रिलायबिलिटी है दैट इज अप्रिशिएटेड इन द ग्लोबल वर्ल्ड मच मोर देन द रिलायबिलिटी ऑफ से चाइना, राइट? दैट इज व्हाई यूएस एंड चाइना में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। they have been taking out their manufacturing from China, and they are looking for investments in other parts of the world. तो इंडिया इज राइट नाउ इन अ वेरी गुड स्वीट स्पॉट जहां पे टैलेंट भी है, अब रिसर्च फंडिंग भी है, गवर्नमेंट की विलिंगनेस भी है, और अब एक ट्रस्ट भी है जो ग्लोबल वर्ल्ड पे इंडिया को हो चुका है। सो दैट इज द इंग्रेडिएंट विच इज हेल्पिंग अस नाउ। Okay, thank you. Question is addressed to from question is that Indian good so far we have witnessed that say so far very few countries are semiconductor. No, the question is that now investment India and beginning and somebody voted the slide that how much the electronic component we are imported. Now once it is stabilized, so that reporting can be down and you can self-sustained. So the person here actually question, but now since it is some kind of initiation, you are going to involve in designing, manufacturing, or packaging. For more that can also be right. So that tomorrow point is not going to be reactive. That's right. So for you all know that the software with Trojan. In fact, just some analysis where it will go in okay. Go into the program when you get the functions, still small things. That is it. So far, so many tools are to identify that the software Trojan will be eliminated. Now the moment when we are talking about semiconductor, chip design and chip, so the new threat is that hardware Trojan. Just example as a layman that buy some a smart TV, a warranty is after 3 years. Till 3 years, it won't mark function. Once the warranty is over, it starts mark function. Why it is that? I mean, I can a small message will be integrated with firmware as somebody told that so some programming injected to the that so that it will always found that when the warranty is going over, then after that starts malfunctioning some component or the other, so that the TV that or any electronic component start malfunction. Now, is a time is really the emerging threat so far. It is of a compared to few countries, so that it's not exposed, but it is started also. The hardware will also started, so the people can keep it in mind so that so how to whenever we are buying any electronic device, have some compliance certificate that it is a hardware Trojan free device. But to be that, I think we're all using smart devices and one handheld device or whatever devices. Like it will tell that how many hours you have some sleep, this kind of sleep, X sleep, how many steps you are walking in a day, something. How it is doing that? Have some kind of a chip inside
finding that of your nervous system somewhere else and giving that how good whatever device that nerve device meant for. How tomorrow, if again I'm talking about mathematics. Tomorrow again wearable technology, who is using the wearable device, it will malfunction that you started from your house to come to office. It will compromise, it will take you to some other. Because your computer is like nothing but a memory hacking device. Going to be a memory hacking device also going to come up. Parallelly, everyone good that amazing. Parallelly, those who are involved, everyone. But those involved, including this, also, in like that's the point. That's for that well taken. Actually, there are many dimensions. Like these all computer industry 4.0 compliant and the environmental sustainability are being well. I think that's a good observation. I think with that we should end today's session. We are already late by 1 hour. And let me now request Professor Tikam to conclude the whole day. First part. Thank you, Professor Sunil. मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप लोग सब लोग इस कार्यक्रम में आए और मेरे लिए तो ये बड़ा ही सुनहरा अवसर था और अनोखा था कि 11वीं क्लास के बाद पहली बार विज्ञान के बारे में मैं कुछ सुन रहा हूँ। विज्ञान से नाता टूट गया, उसका उपयोग लोग सब लोग करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर जैसी लोग बातचीत कर रहे हैं। ये सोचिए कि अगर किसी देश का नेतृत्व इतना बड़ा काम करता तो मोदी जी ऐसे भी उसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। अखबार में बड़े बड़े अक्षर में छप जाता है, डॉक्यूमेंट्री बन जाती, लेकिन उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि नहीं, विद्यार्थियों से बात करेंगे, हम शिक्षकों से बात। तो ये एक इसलिए एक आम मेरे जैसे आम व्यक्ति को भी इसके बारे में समझने का मौका मिला। बहुत सारी बातें हुई और समझ में आया सब कि ये सेमीकंडक्टर होता क्या है। और सेमीकंडक्टर तो ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन का पर्याय है और हम भी सेमीकंडक्टर ही हैं। कभी करंट लगता है, कभी करंट नहीं लगता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं सब लोगों को, उमा जी को और अपने साथी महापात्रा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने सारे शिक्षकों को कि इतने साधारण ढंग आप लोगों ने जब बात कही, यू आर एक्सेलेंट टीचर्स इंक्लूडिंग सुदीप। आप लोग इतने अच्छे टीचर्स हैं कि मुझे हम सामूहिक रूप से हम लोगों को गर्व है अपने शिक्षक, क्योंकि इग्नू जो आज है वो कभी हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन अगर हम लोग आपस में बातचीत करेंगे तो ये विश्वास डगमगाएगा नहीं। आप लोग ये साबित कर लेंगे कि आप लोग कितना जानते हैं। लेकिन एक लगाओ, वो लेकिन ये लगाओ, इतनी बात आप लोगों ने कर दी भाई। हमारे यूनिवर्सिटी को स्मार्ट यूनिवर्सिटी, मैं से यही प्रार्थना कर कि चिट दे देते हैं, ठीक है ना। हम किस दिशा में अग्रसर हैं, हम उस दिशा में अग्रसर हैं और उमा जी के नेतृत्व में ये बहुत सारे काम हो रहे हैं स्मृत के बारे में। और भी हमारे रिजल्ट डिक्लेरेशन और बाहर हम परीक्षाएं लेते हैं, हमारे क्वेश्चन पेपर चले जाते हैं, दिशा में अग्रसर है। लेकिन इनसे मैं बार बार जब भी ये स्मार्ट सिटी के बारे में बात करता, हाँ मैं इनको कहता हूँ जितनी बात ये कर रही हूँ, इग्नू में एक तो करके दिखा दो, कम से कम वेस्ट मैनेजमेंट दिखा दो, सोलर एनर्जी तो दिखा दो। लेकिन ये सिद्धांत आगे नहीं, वो तो एक छोटा सा प्रयास है। आप लोग क्या करोगे? टीचर्स हमारे क्या करेंगे? मैं तो टीचर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो पढ़ाते हो उसको इग्नू में कार्यान्वित करो। मैं बहुत आभारी हूँ सब
कि इतने सबके सहयोग से, किसी एक व्यक्ति के सहयोग से नहीं हुआ। और हमारे जो माननीय कुलपति महोदय, वो यहाँ आज सशरीर उपस्थित नहीं है, वो कहीं और अभी किसी कार्य में व्यस्त, लेकिन उनकी आत्मा यहीं पर है। कभी उमा जी से बात करेंगे, कभी इनसे बात करेंगे, कभी मुझसे बात करेंगे। सब ठीक है ना? हम लोग हाँ सर, सब ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं और सबका आप लोगों का नाम मैंने कि पूरा स्कूल ऑफ साइंसेस, कंप्यूटर्स एंड इंजीनियरिंग, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इंजीनियरिंग, मैंने कहा हाँ इंजीनियरिंग। तो इसलिए बहुत बढ़िया, आगे भी आप लोग इसी तरह का कार्यक्रम करते रहिए और अपने विद्यार्थियों को जो भी आप लोगों ने ये कहा है उसका एक ईएमपीसी से सर मैं अनुरोध करूंगा कि ये इन लोगों ने जो बातें कही उसका एक छोटा सा कैप्सूल बना वो हम अगर अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दें, हाँ, तो वो अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दें तो ये बहुत सार्थक चर्चा हो रही है। तो इसमें जैसे जो मैं बोल रहा हूँ तो बेकार की चीजें उसको रिकॉर्ड करने की या उसको भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, प्रोफेसर सुदीप झा, सुधांश, प्रोफेसर यादव और सब लोगों ने जो बात कही, और हमारे एक्सपर्ट, सॉरी मैं अपने एक्सपर्ट, हाँ अभिषेक जी, मैंने बहुत बहुत कि आपने इतने 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 सामान्य शब्दों से थैंक यू, आपने थैंक यू। बात हमें बताई। आपकी बात हम सारे विद्यार्थियों तक, हमारे पास 35 लाख विद्यार्थी, हम 35 लाख विद्यार्थियों तक आपकी बात पहुंचाएंगे। और इसीलिए मैं अपने साथी डॉक्टर महापात्रा से कह रहा था कि अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर, अपने ज्ञान दर्शन और उमा जी से के स्वयं स्वयं प्रभा, मैं जब स्वयं प्रभा का नाम सुनता हूं ना तो मुझे याद आ जाता है कि जब बंदर खोजने गए थे सीता जी, मिल ही नहीं रही थी सीता जी, तो स्वयं प्रभा प्रकट, स्वयं प्रभा प्रकट हुई और कहीं लंका में जाओ। तो तब वो सब भागे भागे गए वहां पर, और तब हनुमान को कहा गया कि हनुमान भाई स्वयं प्रभा ने कहा है तुम्हें भी तुमको तुम्हारी अपनी शक्ति याद नहीं हो रही, तो वो शक्ति है कोई आ गई तो हनुमान कूद कर चले गए और सीता जी का पकड़। तो स्वयं प्रभा ये है कि हम कहीं से कहीं पहुंच सकते। तो इसलिए इसलिए आप सब लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कुल सचिव महोदय का, ये भी वैज्ञानिक है और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एमटेक है, तो मैं तो साधारण विद्यार्थी हूँ, सीखता हूँ। हाँ पीएचडी, अरे एमटेक पीएचडी और भी जितना है सब। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ आपका भी धन्यवाद, बाद में और he has a frame. Can we also get some kind of a recommendation that we will be doing? हाँ कर देंगे। If you have any say.